हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एग्जाम दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कनेक्ट हो जाइए एक बार, काफ़ी दिनों के बाद हमारा ये सेशन आज फिर से यहाँ पर साथ में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा आप सभी लोगों के लिए। और यहाँ पर हम देखेंगे आज ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस आज इस सेशन में आप करने वाले हैं, जो भी PYQ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के। तो एक बार बता दीजिएगा कि आपको मेरी ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें क्लियर हैं या नहीं। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग सेशन लाइव हो गया है। चलिए, तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए कि क्या आप सभी लोग मुझे क्लियरली देख और सुन पा रहे हैं। और अपनी प्रिपरेशन भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, आपकी क्या स्टेटस है आपकी प्रिपरेशन की। तो जब तक सब लोग कनेक्ट होते हैं, जस्ट मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि यहाँ पर एग्ज़ाम दोस्त पर अभी आपके लिए बेस्ट ऑफर्स चल रहे हैं। और यहाँ पर आप उड़ान गेट एंड ESE बैच जो है टेक्निकल का, वो ज्वाइन कर सकते हैं ओनली एट ₹18,000 प्लस 200 प्लस GST पर, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 26,000 प्लस GST है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर लक्ष्य गेट एंड ESE टेक्निकल रिकॉर्डेड जो बैच है वो भी आप कर सकते हैं ज्वाइन ओनली एट ₹10,500 प्लस GST। तो इसके लिए आपको कोड यूज़ करना है EB30। और इसके साथ अगर आप देखें तो जो गेट 2026 और 27 के लर्नर्स हैं उनके लिए फ्लैट 30% ऑफ यहाँ पर है। स्टार्टिंग जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 28 अप्रैल से, तो यहाँ पर आप कोड यूज़ कर सकते हैं फिर से EB30। और यहाँ पर आपको जो डिस्काउंट मिलने के बाद, जो वेवर के बाद आपकी फ़ीस लगेगी वो सिर्फ 16,800 प्लस GST। और 2 इयर्स का जो कोर्स है उसके लिए 26,600 प्लस GST। तो अंकित सर के साथ आप लोग जुड़े ही हैं, अभी आप इलेक्ट्रिकल के भी PYQs यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे उनके साथ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत दिनों के बाद हमारा ये सेशन है साथ में। हेलो सैयद, हेलो अभिषेक, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल मतलब जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर MCQ जो क्वेश्चंस हम देखेंगे उसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। वहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और साथ साथ आपका एक थॉरो रिवीजन, आपको जो सिलेबस है पूरा उसका बिल्कुल आपका होना चाहिए। अगर आप अच्छी तरह से आपने सिलेबस को रिवाइज किया है तो जो MCQ क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली आपसे वो बनेंगे। बस आपको टाइम मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? LTI सिस्टम इज कॉजल। LTI सिस्टम को हम कॉजल कब कहते हैं? अच्छा, इसके साथ एक और चीज़, अगर जैसे यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा थियरी डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक सेशन में इतने क्वेश्चंस थियरी के साथ नहीं कर पाएंगे हम। जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है डेफिनेटली उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरी, जिसमें रिविजन थ्रू क्वेश्चंस नाम से वो प्लेलिस्ट होगी। उसमें आपको डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स, बेसिक्स ऑफ सिस्टम्स से ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पर एक एक लेक्चर आपको मिलेगा, जिसमें शॉर्ट में पूरे थियरी का रिवीजन है। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। उन लेक्चर्स को आप अगर देख लेंगे तो आप देखेंगे कि ESE के क्वेश्चंस आपसे देखते ही बनेंगे। मतलब इसमें आपको विद इन आप कह सकते हैं 20 to 30 सेकंड्स आप क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल कैपेबल होंगे। ठीक है, तो आप लोग भी बताते रहिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या इसका ऑप्शन होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर पूछा गया कि LTI सिस्टम को हम कॉजल कब कहते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। आप जानते हैं LTI सिस्टम कॉजल मतलब, अगर हम इनपुट आउटपुट के टर्म से बात कर रहे हैं, डिपेंड करता है आप इनपुट आउटपुट के टर्म से बात कर रहे हैं या फिर इम्पल्स रिस्पॉन्स के टर्म्स में आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपसे बोला गया वो इम्पल्स रिस्पॉन्स को लेकर के पूछा गया। तो आप ये जानते हैं कि इम्पल्स रिस्पॉन्स हम अगर सिस्टम को देखकर कॉजल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हमने ये 3 टाइप के इम्पल्स रिस्पॉन्सेज बना दिए कि h(t) अगर हम t के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो अगर एक हमारा सिस्टम है जिसमें इम्पल्स रिस्पॉन्स ऐसा है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स ऑफ t के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसको लिख दिया -2 से लेकर +5। एक हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स ऐसा बना दिया जो कि सिर्फ पॉजिटिव साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे h(t) मान लेते हैं 0 से लेकर 4 सेकेंड्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। एक हमने ये इम्पल्स रिस्पॉन्स बना दिया जो कि सिर्फ नेगेटिव साइड में ही एग्जिस्ट कर रहा है, ये h(t) विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये कॉन्सेप्ट तो आप बिल्कुल जानते ही हैं कि किसी सिस्टम को आप कॉजल तब कहते हैं जब उस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स एग्जिस्ट करे ओनली फॉर t ग्रेटर देन 0। मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स मस्ट बी 0 फॉर t लेस देन 0, या फिर टाइम की, चाहे वो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। तो यहाँ पर जैसे स्टेटमेंट्स आप पढ़ेंगे, हमसे पूछा गया कॉजल कब कहेंगे। तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखें, इफ एंड ओनली इफ इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स इज नॉन जीरो फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n। जैसे देखिए, अगर यहाँ पर हम देखें कि ये इम्पल्स रिस्पॉन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों t की वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम को आप कहते हैं इट इज नॉन कॉजल। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉजल सिस्टम। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ t के लिए एग्जिस्ट करता है तो ये सिस्टम क्या है? इट इज अ कॉजल सिस्टम।
और अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज ऑफ टी के लिए एग्जिस्ट करे तो उसको क्या बोलते हैं हम? एंटी कॉजल सिस्टम। ठीक है, तो अगर हमसे कॉजल की बात पूछी गई है, मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स कॉजल के लिए क्या होना चाहिए? इम्पल्स रिस्पॉन्स एच टी और एच ऑफ एन मस्ट बी जीरो फॉर टी लेस देन जीरो। डेफिनेटली टाइम की नेगेटिव वैल्यूज के लिए जीरो होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है कि बोला गया कि अगर इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स नॉन जीरो हो फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एन। डिस्क्रीट के लिए तो एन के टर्म से बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस का होता तो टी के टर्म से बात होती। तो ये हमारा तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 2 आपने देखा, इफ एंड ओनली इफ इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स इज नॉन जीरो फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन। अब जैसे नॉन जीरो ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन तो यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एन के लिए डेफिनेटली जीरो होना चाहिए, मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन देखेंगे आप, इफ इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स इज जीरो फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एन, यही तो हम बात कर रहे हैं। इम्पल्स रिस्पॉन्स मस्ट बी जीरो फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ टाइम। इफ इट इज अ कंटिन्यूस टाइम सिस्टम देन टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाई टी, अदरवाइज इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर, जैसे हम ये जो सेशन है ये हम बाईलिंगुअल रखेंगे, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। सो प्लीज़ लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, मीन्स हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया और who cannot understand the Hindi language. So I'll be discussing the questions in both the languages, Hindi as well as in English. So I hope both of you can understand whatever we are talking about, that a system is causal only if its impulse response is zero for the negative values of time. So the correct option is, if its impulse response is zero for negative values of n, so it is the correct option. Impulse response must be zero for negative values of n. And option D, if you see, if its impulse response is zero for positive values of n. So impulse response is zero for positive values of n. It is not. If a system is causal, then impulse response must exist only for positive values of n. So please let me know how many of you are from South India. Yes, option C is correct, absolutely correct. Okay, Sakshi comfortable with both the languages? सर दोनों में ही कंफर्टेबल, बहुत अच्छे विनीत, चलिए बहुत अच्छे अभिषेक। चलिए, तो आप सभी लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, इसी तरह आप क्वेश्चन बताते रहिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका रिवीजन होना चाहिए। अगर आपने पहले क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाए, रिवीजन हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट जिनको नहीं पता उनको तो सॉल्यूशन देखना ही है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको आंसर करते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन LTI सिस्टम इज गिवन बाई 5 UT if the input to the system is given by e to the power minus t, then the output of the system is. So at first in ESE exams, whenever you see the terms like e to the power minus t, then you must understand that it is not only e to the power minus t. अगर आप e to the power minus t सिर्फ समझ करके इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ESE में बहुत सारी जगहों पर ऐसी दिखते हैं आपको चीज़ें जहाँ पर कि UT मिस्ड होता है, मतलब मिसिंग होता है। अंडरस्टूड रखना है आपको कि जैसे ये जो फंक्शन गिवन है कि यहाँ पर हमसे बोला गया कि 5 UT हमारे इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू, मतलब अगर हम यूनिट इम्पल्स इनपुट अप्लाई करते हैं तो आउटपुट हमारा कितना है, 5 UT है। तो पूछा गया अगर हम उस सिस्टम में इनपुट में अप्लाई कर दें टू द पावर माइनस टी तो क्या हमारा सिस्टम का आउटपुट क्या होगा। तो ये आपको यहाँ पर अंडरस्टूड रखना है फॉर ESE एग्जाम्स। जहाँ भी आप ESE के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपसे 1 बोला जा रहा है तो 1 का मतलब है 1 इंटू UT, ठीक है। अगर सिर्फ e टू द पावर माइनस टी गिवन है तो भी आपको अंडरस्टूड रखना है कि वो उनके बोलने का क्या मतलब है, e टू द पावर माइनस टी UT की वो बात कर रहे हैं, तभी आप इन गिवन ऑप्शंस तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। सो फॉर ESE एग्जाम्स यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड दैट व्हेनेवर UT इज मिसिंग देन यू हैव टू कंसिडर इट बाय योर वे। सो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, इम्पल्स रिस्पॉन्स 5 UT है, मतलब h ऑफ t गिवन, हियर इट इज गिवन दैट h of t is 5 UT and we have to find out the output of the system for input e to the power minus t. X of t is given to be e to the power minus t. We are considering e to the power minus t UT. So output we have to find out. So you can go with both the methods. If you want to solve it in time domain, then you can prefer convolution, but it will be simplified if you use the Laplace transform method. So if we solve this question in frequency domain, then h of t, if we have to find output in time domain, then xt convolved with ht will give you the output. Applying Laplace transform on both the sides, you know that using the property, convolution property of Laplace transform, y of s is x of s multiplied with h of s.
So the better way would be if we find the output in the frequency domain first, and then to find the yt we will take the inverse Laplace transform of y of s. तो यहाँ से अगर हम इसमें शुरू करें, जैसे h of t पता है, x of t पता है, तो यहाँ से h of s की वैल्यू क्या आ गई, ht का लैप्लास 5ut लैप्लास इज 5/s, और xt का लैप्लास के लिए x of s that is e to the power minus 80 ut Laplace is e to the power minus 80 ut Laplace is 1/s plus a. So the Laplace of xt x of s is 1/s plus 1. So we have h of s 5/s, x of s 1/s plus 1. So y of s would be xs into hs, that is equals to 5/s into s plus 1. Using the partial fraction, we can find that if you have to perform partial fraction on 1/s plus a s plus b, then you know that it is going to be 1/b minus a into 1/s plus a minus of 1/s plus b. So if we consider this term as s plus a is 0 and it is s plus b is 1, so the partial fraction would be 5/1/b minus a. B is 1, a is 0, 1 minus 0 is 1, so it will be 5 into 1/s minus of 1/s plus 1. So simply we have got the result for y of s, and if we take the inverse Laplace of this function, then yt would be 5 into inverse Laplace of 1/s is ut. So if we write ut common outside, so 1/s we can write here 1 minus 1/s plus 1, inverse would be e to the power minus 80 ut, a is 1, therefore e to the power minus t ut. So the option should be 5 into 1 minus e to the power minus t ut, and accordingly 5 into 1 minus e to the power minus t ut, option A is correct. क्या मिल रहा है आप लोगों को आंसर? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिल्कुल सही। साक्षी, सुमुखा, विनीत, आप सभी के आंसर्स करेक्ट हैं। गेट के लिए सिग्नल्स एंड सिस्टम आएगा, लेकिन अभी उसमें टाइम है, अभी दूसरे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं ईएसई में, जहाँ पर आपको इनपुट और इम्पल्स रिस्पॉन्स दे करके आउटपुट आपसे पूछा जाता है। तो इसके लिए बिल्कुल आप तैयार रहेंगे, दोनों ही डोमेन्स में आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो टाइम डोमेन या फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। A linear discrete time system is characterized by its response hk of n, that is n minus k u of n minus k, to a delayed. See here what is given. Linear discrete time system is characterized by its response to a delayed unit sample del of n minus k. It means when x of n we are applying x of n equals to del of n minus k to a system, to a discrete time system, then this system is producing an output which is given as hk of n, that is equals to n minus k u of n minus k. तो यहाँ पर आपको गिवन है कि अगर हम किसी एक डिस्क्रीट टाइम जो कि लीनियर सिस्टम है, अगर हम उस सिस्टम में ये इनपुट अप्लाई करते हैं डेल ऑफ एन माइनस के, तो उसका जो आउटपुट है वाई एन, इसी वाई एन को ही रिप्रेजेंट किया गया है एच के ऑफ एन से। यहाँ पर देखिए के जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे तो आप देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। तो पूछा गया कि अगर ऐसा रिलेशन है तो ये सिस्टम क्या होगा, शिफ्ट इनवेरिएंट, शिफ्ट वेरिएंट, स्केल इनवेरिएंट और स्केल वेरिएंट। स्केल इनवेरिएंट, स्केल वेरिएंट का मतलब होता है कि अगर आप एम्पलीट्यूड या टाइम में स्केलिंग, अब यहाँ पर भी स्केलिंग का बताया नहीं गया, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि स्केलिंग टाइम और एम्पलीट्यूड दोनों में होती है। अगर आपको नहीं गिवन होता, मान लीजिए पूछा गया होता स्केल इनवेरिएंट ही, बगैर चारों ऑप्शंस में स्केल इनवेरिएंट ही गिवन होता, तो आप प्रेफर करते टाइम स्केलिंग को चेक करना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि शिफ्ट इनवेरिएंट मतलब टाइम इनवेरिएंसी से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या फिर ये सिस्टम टाइम वेरिएंट है। क्या ऑप्शन आ रहा है आप लोगों का, क्या रिजल्ट है? अभिषेक का ऑप्शन बी है। देखिए यहाँ पर जो आपसे पूछा गया, जैसे यहाँ पर अगर हम एक शिफ्टेड इंपल्स अप्लाई करते हैं, जिसको कि हमने कितने यूनिट से शिफ्ट किया हुआ है, के यूनिट से,
तो उसके लिए ये एच के ऑफ एन से रिप्रेजेंटेशन, मतलब अगर हमने के यूनिट से शिफ्ट किया है तो जो आउटपुट है हमारा वो यू ऑफ एन माइनस के मतलब के से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और उसका एम्पलीट्यूड कितना है एन माइनस के, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। या तो आप शिफ्ट इनवेरिएंट कब कहते हैं सिस्टम को, व्हेन यू से दैट अ सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट और शिफ्ट इनवेरिएंट इफ any time shift in the input results in the corresponding time shift in the output without changing the nature of the output। अगर हम कोई इनपुट अप्लाई करते हैं, उस इनपुट में अगर हमने कुछ शिफ्ट अप्लाई कर दिया तो वही शिफ्टिंग रिफ्लेक्ट होनी चाहिए सिर्फ आउटपुट में, आउटपुट का नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को आप क्या कहते हैं, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहते हैं। नॉर्मली जो टाइम इनवेरिएंसी प्रॉपर्टी आप चेक करते हैं एग्जाम में, जब मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनपुट आउटपुट रिलेशन गिवन होता है। जैसे आपके पास इस टाइप से गिवन होता है कि y ऑफ n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स एन, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं गिवन, यहाँ पर ऐसा नहीं गिवन है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट आपको बता दिया गया और उस केस में पूछा जा रहा है कि सिस्टम हमारा टाइम इनवेरिएंट है या इनवेरिएंट सिस्टम है, ठीक है। तो अलग अलग तरीकों से चेक करना आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, अगर हमें ये पता है कि k की शिफ्टिंग अगर किसी इम्पल्स में है तो ये आउटपुट है। अगर हम इसमें विदाउट शिफ्टिंग के कोई इम्पल्स अप्लाई कर देते, मतलब अगर हम k की वैल्यू 0 पुट कर देते, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर गिवन है एच के ऑफ n, इफ इट इज गिवन टू बी n माइनस के इंटू यू ऑफ n माइनस के, ठीक है। तो अगर हम इसमें k इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, एट k इक्वल्स टू 0, तो हमें h0 ऑफ n क्या मिलेगा, h0 ऑफ n, k की जगह अगर आपने 0 पुट किया तो n un मिलेगा। अब ये h0 ऑफ n क्या है, अगर हम इम्पल्स में कोई शिफ्टिंग अप्लाई ना करें उसके लिए ये हमारा आउटपुट है। अगर हम इम्पल्स में कोई शिफ्टिंग अप्लाई ना करें मतलब ये हमारा क्या है, इट इज रिस्पॉन्स फॉर इम्पल्स विदाउट डिले, विदाउट डिले। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट इज फॉर अगर हम इनपुट xn क्या अप्लाई करते हैं, del n। अगर हम इनपुट xn अप्लाई करते हैं del n जिसमें कोई शिफ्टिंग नहीं है, अगर उसमें कोई शिफ्टिंग नहीं है तो उसका आउटपुट क्या कहलाएगा। हम अगर किसी यूनिट इम्पल्स इनपुट के लिए आउटपुट देखते हैं तो उसी आउटपुट को आप क्या नाम देते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स नाम देते हैं। मतलब इस सिस्टम के लिए आपने क्या देखा कि अगर हम इम्पल्स में कोई शिफ्टिंग अप्लाई ना करें, अगर हम ओरिजिन पर जो इम्पल्स आता है, जो नॉर्मल हमारे यूनिट इम्पल्स फंक्शन है, अगर हम वो अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ हमें क्या मिल रही है, ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है इम्पल्स रिस्पॉन्स। ये हमें क्या दे रहा है, इम्पल्स रिस्पॉन्स। क्योंकि यहाँ पर ये जो k है, ये k क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे डिले को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इम्पल्स को जितने डिले करके अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आउटपुट है वो ये। अब यहाँ पर इसके आगे आपको करने की जरूरत नहीं, आप इसमें और भी मेथड्स यूज कर सकते हैं ये चेक करने के लिए सिस्टम ये हमारा टाइम वेरिएंट है या नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको ये पता चल गया कि किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स कितना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इम्पल्स रिस्पॉन्स एग्जिस्ट ओनली फॉर LTI सिस्टम्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ LTI सिस्टम्स का ही एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर आप किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड कर पा रहे हैं, अगर किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है आपको n un, इसका मतलब है कि वो सिस्टम कैसा है, LTI सिस्टम है। इसका मतलब वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो यहाँ पर इसलिए डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, वो एक शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम होगा। इम्पल्स रिस्पॉन्स एग्जिस्ट ओनली फॉर LTI सिस्टम, देयरफॉर द सिस्टम इज already known to be a linear as well as a time invariant system, so the system is shift invariant। और इसको कैसे समझ सकते हैं आप, जैसे अगर आप यहाँ पर xn हमारे पास एक इनपुट था, उसके लिए हमारे पास एक ही आउटपुट आ रहा है। अगर हम इस इनपुट में कुछ शिफ्टिंग कर दें तो आउटपुट भी उतने ही से शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पर n को रिप्लेस कर देते n प्लस k से, अगर हम इस इनपुट में n को रिप्लेस कर देते n प्लस k से, ठीक है, तो हमारे पास ये इनपुट क्या बन जाता, n प्लस के माइनस के, मतलब ये हमारा इनपुट हो जाता था डेल ऑफ n। तो यहाँ दिख रहा है कि अगर हम इनपुट को k से अगर हम एडवांस कर रहे हैं, n प्लस के से रिप्लेस कर रहे हैं अगर n को, तो आउटपुट भी आप देख रहे हैं उतना ही से एडवांस हो जा रहा है और कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो इसको देखकर भी आप कह सकते हैं कि जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, एक शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए, तो ऑप्शन बी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप बी ऑप्शन देखें तो शिफ्ट वेरिएंट लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या कहा, शिफ्ट वेरिएंट का मतलब हो गया टाइम वेरिएंट सिस्टम। बट द सिस्टम इज एन LTI सिस्टम एज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज एग्जिस्टिंग, so this system will definitely be a shift invariant system, therefore the option
ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Next question is the response of the system yn equals to xn to the following input signal is delayed from the input is exactly same as the input leads the input varies with the signal. So if you read the question properly, read between the lines, yn is given to be x of n. Irrespective of what input we are applying, it is mentioned in the first line of the question itself that the output of the system is going to be same as the given applied input. Yn is equals to x of n. So whatever input you will be applying, according to the given condition, the output is going to be the same, that is yn equals to xn, that is output will be the same as that of the applied input. So is exactly same as the input is the correct option, and the correct option is B. तो आप सभी को देखकर ही पता चल गया कि जैसे यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि आउटपुट इनपुट के ही बराबर है, तो चाहे इनपुट हम कुछ भी अप्लाई करें इससे फर्क नहीं पड़ता। इनपुट आउटपुट रिलेशन अगर हमें कह रहा है कि आउटपुट और इनपुट सेम है, इसका मतलब आउटपुट इज एग्जैक्टली सेम एज द इनपुट। होप कि आप सभी को क्लियर होगा, ये क्वेश्चन में कुछ भी था नहीं। चलते हैं आगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफ टू सिग्नल्स आइडेंटिकल इन शेप आर डिस्प्लेड relative to each other, then the difference in propagation time from point of origin of transmitted signal results in. हिंदी में समझेंगे, अगर यहाँ पर बोला गया हमसे ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपका टी है जिसके रिस्पेक्ट में आप सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए एक हमारा x1 टी और x2 टी। जैसे अगर हम कहें कि एक हमारे पास की है x1 टी और एक हमारे पास है सिग्नल x2 टी, ठीक है। इन दोनों में बोला गया कि शेप में ये आइडेंटिकल हैं, बस ये कैसे हैं, इन शेप आर डिस्प्लेड रिलेटिव टू ईच अदर, लेकिन ये डिस्प्लेस्ड है, एक दूसरे से डिस्प्लेस्ड है। मतलब अगर ये 0 से 4 सेकंड्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मान लीजिए कि ये 5 सेकंड से 9 सेकंड्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। शेप वाइज ये दोनों सिग्नल्स आइडेंटिकल हैं, जैसा इसकी जो वैल्यू है इसकी भी वही वैल्यू, ठीक है। ये हमारा x2 ऑफ टी, मतलब यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आप फाइंड अगर करना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं x2 ऑफ टी इज x1 ऑफ टी माइनस 5, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया कि ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफ टू सिग्नल्स आइडेंटिकल इन शेप आर डिस्प्लेस्ड रिलेटिव टू ईच अदर, देन द डिफरेंस इन प्रोपगेशन टाइम फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल रिजल्ट्स इन। तो जो डिफरेंस है प्रोपगेशन टाइम में वो किस में, वो क्या होगा, मतलब वो किस में रिजल्ट करेगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं टाइम शिफ्ट, टाइम रिवर्सल, टाइम स्केलिंग एंड टाइम रिडक्शन। तो टाइम रिडक्शन अगर दोनों की विड्थ सेम है तो दोनों को वहाँ पहुँचने पर प्रोपगेशन डिले दोनों के लिए सेम होगा। लेकिन अगर ये हमने 0 सेकंड से 4 सेकंड्स के सिग्नल को ट्रांसमिट किया, तो जो भी प्रोपगेशन डिले के बाद ये पहुंचेगा, उतने ही प्रोपगेशन डिले के बाद ये सिग्नल भी पहुंचेगा, लेकिन दोनों के बीच में ऑलरेडी एक डिस्प्लेसमेंट था टाइम में। तो ये दोनों जो रिजल्ट होंगे जब प्रोपगेशन हम ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, तो दोनों जो हमारे पास प्रोपगेट होकर जहाँ पहुँचेंगे, तो उनके बीच में हम कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि दोनों के बीच में आपको एक टाइम शिफ्ट मिलेगा। तो टाइम रिवर्सल, टाइम स्केलिंग, टाइम रिडक्शन, देखते ही क्वेश्चन आप बता सकते थे कि इसका कहीं से कोई लिंक ही नहीं है कि आप टाइम रिवर्सल या टाइम स्केलिंग या टाइम रिडक्शन के लिए जाएंगे। डेफिनेटली जो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए वो क्या होगा, टाइम शिफ्टिंग होगा। क्लियर? चलिए 5 का ए इज करेक्ट, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने से ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। A continuous time system is a system in which continuous time input signals are applied, resulting in continuous time output signals. Continuous time systems किनको कहते हैं हम? ऐसे systems जिसमें हम जो input अप्लाई करें वो भी एक continuous time signal हो, और जो वो output system प्रोड्यूस कर रहा है वो output भी हमारा जो signal है वो कैसा signal हो, वो भी हमारा एक continuous time signal हो। मतलब ये जो statement 1 है, it is correct. The statement says that a continuous time system is a system in which we apply an input which is a continuous time signal, and it produces an output which is also a continuous time signal. The first statement is correct. Next, a system is said to be linear if it follows superposition theorem. It is absolutely correct. You know that superposition is made up of two properties. First one is additivity, and the next one is homogeneity. And if a system follows both the properties, then it is said to be following the superposition, and then the system is said to be a linear system.
So the option second statement is also correct. Option second, the third statement is a system is said to be non-linear if it follows the superposition theorem. तो ये तो बिल्कुल ही इरेलीवेंट ऑप्शन ही आपको दिख रहा है स्टेटमेंट ही, कि अगर हमने नॉन लीनियर कह दिया इसका मतलब है कि सुपरपोजिशन इज नॉट फॉलोड. इफ द सुपरपोजिशन थ्योरम इज फॉलोड देन द सिस्टम इज सेड टू बी अ लीनियर सिस्टम. So definitely statement 3 is wrong. So the correct options are 1 and 2 only, and obviously all of you must be able to solve the question. And yes, 6 का भी कौशलेंद्र आपका आंसर बिल्कुल सही है. सुमुखा आपका भी आंसर 6 के लिए भी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे. सर क्वेश्चन 3 में n से इनपुट मल्टीप्लाई हो रहा है तो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा क्या? नहीं, वो इनपुट आउटपुट रिलेशन नहीं है सुमुखा. देखिए यहाँ पर what Sumukha has asked that in this question, if output is n given, if it is given, देखिए यहाँ पर अगर आपके पास ये given होता, अगर ये आउटपुट इनपुट रिलेशन गिवन होता कि yn इक्वल्स टू n इंटू xn, अगर हमारा आउटपुट इनपुट रिलेशन ऐसा गिवन होता कि हम अगर इनपुट में n से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तब डेफिनेटली इट इज टाइम वेरिएंट, डेफिनेटली इट इज टाइम वेरिएंट, ठीक है. लेकिन अगर हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन, इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारा गिवन है अगर n इंटू un, यहाँ इम्पल्स रिस्पॉन्स में n इंटू xn तो नहीं है, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है. और ये अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स है इट इज एन इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है. एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स एग्जिस्ट ओनली फॉर वट एवर द इम्पल्स रिस्पॉन्स इज. इम्पल्स रिस्पॉन्स चाहे एक रैम्प फंक्शन है चाहे कोई भी फंक्शन है, लेकिन इम्पल्स रिस्पॉन्स है अगर, तो इट इम्पल्स रिस्पॉन्स एग्जिस्ट ओनली फॉर LTI सिस्टम, एग्जिस्ट ओनली फॉर LTI सिस्टम. होप नाउ इट इज क्लियर, ठीक है. अगर हमारा बिल्कुल आपका कहना सही है, अगर ऐसा गिवन होता है n इंटू xn तब तो डेफिनेटली ये हमारा क्या होता, टाइम वेरिएंट होता. लेकिन क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स है हमारा, यहाँ पर n इंटू xn की कंडीशन नहीं है, तो ये सिस्टम हमारा क्या है, इट इज एन LTI सिस्टम. सो द सिस्टम इज शिफ्ट इनवेरिएंट. चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज सेड टू बी यूनिट सैंपल सीक्वेंस. अब यहाँ तो आपसे डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी गई है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन की डेफिनेशन. So the according to the definition, it is a unit sample sequence or unit impulse sequence which exists only at n equals to 0, and its amplitude as well as its area, both values are 1. So it is said to be del of n. And how you define del of n? That is, it exists at n equals to 0 only. So del of n is equals to 1 only if n equals to 0, and it is 0 if n is not equals to 0, as well as अगर हम इसके एरिया की भी बात करते हैं, मतलब n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, डेल ऑफ n इज इक्वल्स टू 1. सो इट इज द कंप्लीट डेफिनेशन. तो ये दोनों ही चीज़ें हैं. यहाँ पर आपसे पूछा गया कि डेल ऑफ n किसको कहेंगे, तो डेल ऑफ n इज 1 फॉर n इक्वल्स टू 0 एंड 0 फॉर n नॉट इक्वल्स टू 0. ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है. इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं. आई होप एवरी वन ऑफ यू आर गेटिंग द पॉइंट्स, ठीक है. बिल्कुल सही, बहुत अच्छे. कौशलेंद्र, अभिनंदन, अभिषेक, वेरी गुड. साईं कृष्णा, आपका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है. चलिए, so the next question is, signal is said to be deterministic. See here, two statements, there are 4 statements. Out of these 4, 2 statements are on deterministic signals, as well as the next 2 statements are about random or stochastic signals. Okay, so random और stochastic और नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स आर व्हाट? ऐसे सिग्नल्स जिनके लिए आप कोई एक्सप्लिसिट फंक्शन मैथमेटिकल नहीं लिख सकते, ठीक है. रैंडम का मतलब ही क्या है कि जिसके लिए हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 4 सेकंड्स पर इसकी क्या वैल्यू होगी, 5 सेकंड्स पर क्या वैल्यू होगी. अगर आपने किसी सिग्नल को ऐसा लिख दिया, इफ यू कैन राइट अ सिग्नल x of t to be t square plus 2, it means if you can write the explicit mathematical expression for any particular signal, it means that you can predict its value at any instant of time. आपको चाहे सिग्नल की वैल्यू 5 सेकंड्स पर देखना हो तो आप ये बता सकते हैं कि x of t at t is equals to 5 वैल्यू कितनी होगी, 25 plus 2 that is 27, ठीक है. तो ऐसे सिग्नल्स को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स, ठीक है, जिनके लिए आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना पॉसिबल है. और जिनके लिए ऐसा नहीं कर सकते वही सिग्नल के हैं, रैंडम सिग्नल्स हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, डिटर्मिनिस्टिक इफ देयर इज नो अनसर्टेनिटी ओवर द सिग्नल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. If you can represent a particular signal like this or any expression, mathematical expression, then is there any uncertainty? You can predict value of the signal at any instant of time.
चाहे 5 सेकंड पर पूछा जाती वैल्यू आपसे पूछी जाती या फिर 10 सेकंड पर पूछी जाती, किसी भी टाइम पर आप उसकी वैल्यू बता सकते हैं अगर आप उसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपका, डिटर्मिनिस्टिक है अगर उसमें नो अनसर्टेनिटी, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, डिटर्मिनिस्टिक इफ इट इज एक्सप्रेसिबल थ्रू अ मैथमेटिकल इक्वेशन, ये तो हमने बात की, मतलब डेफिनेटली ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। थर्ड पूछा गया, रैंडम और नॉन डिटर्मिनिस्टिक इफ देयर इज अनसर्टेनिटी ओवर द सिग्नल एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब देखिए ये दोनों एक ही स्टेटमेंट्स है, अगर यहाँ डिटर्मिनिस्टिक है तो यहाँ पर बोला गया कि हम इसको बता सकते हैं, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी। अगर ये रैंडम है तो इसमें अनसर्टेनिटी होगी, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स ही सेम है, तो अगर ये करेक्ट है तो ये भी करेक्ट है। और ऐसे ही अगर डिटर्मिनिस्टिक के लिए आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, और इसलिए ऑप्शन आपका 4 भी करेक्ट है, रैंडम और नॉन डिटर्मिनिस्टिक इफ इट इज नॉट एक्सप्रेसिबल थ्रू अ मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है आपका वो 1 2 3 एंड 4, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, कितने लोग ऑप्शन डी आ गया? चलिए बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, तो 8 का ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ठीक है, सारे ही ऑप्शंस इसमें जितने भी स्टेटमेंट्स गिवन है सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द इनपुट सिग्नल x of t and impulse response h of t of a continuous time system are described as x of t is given and h of t impulse response is given, then output will be what? Okay, so what is the expression of output? We have already discussed in time domain output is going to be input convolved with impulse response, and if we find the output in frequency domain, then using convolution property of Laplace transform you can find y of s as x of s into h of s. For e to the power minus at ut, x of s is what? Laplace of e to the power minus at ut is 1 upon s plus a. At the place of a, here it is 3, so the transform will be 1 upon s plus 3. And for h of t, if ut, h of t would be ut, then the transform is 1 upon s. Using time shifting property of Laplace transform, if you apply a time shift of 1 unit, then u of, or if you apply a time shift of t naught unit, then u of t naught, t minus t naught, it is e to the power minus st naught times the transform 1 upon s. So we are shifting the step function by 1 unit only. So h of s would be e to the power minus s into t naught is 1, so it will be e to the power minus s upon s. Therefore y of s is x of s into h of s. By multiplying these two, it is 1 upon s into s plus 3 into e to the power minus 3s. Whenever such factors are present, e to the power minus s, then just keep this factor outside, use the partial fraction of the remaining term, and after partial fraction use this factor when you have to take the inverse Laplace transform. So if we use the partial fraction of this on this bracket term, then what we will be getting is, it is again 1 upon s plus a into s plus b. A value is 0, b value is 3, so the transform partial fraction will be 1 upon b minus a, that is equals to 1 upon 3 minus 0, that is equals to 3 only. So 1 upon 3 into 1 upon s plus a, that is 1 upon s, minus 1 upon s plus b, that is 1 upon s plus 3, into e to the power minus s. अब आप इन दोनों ही फैक्टर्स के साथ e to the power minus s को मल्टीप्लाई करके इसका इन्वर्स लेंगे। अगर सिर्फ 1 upon s होता तो इन्वर्स क्या होता? ut। अगर इसमें e to the power minus s मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब क्या होगा? अगर इसमें 1 upon s e to the power minus s का मल्टीप्लाई होता है, या e to the power minus st नॉट का फैक्टर का मल्टीप्लाई होता है जब आप टाइम शिफ्टिंग करते हैं, तो ये फैक्टर बस बता रहा है कि जितना इस फैक्टर का इन्वर्स होता, इसके साथ अगर हम इन्वर्स लेंगे तो उसमें t को रिप्लेस करना है आपको t माइनस 1 से, माइनस 1 की आपको शिफ्टिंग लेनी है। ऐसे ही अगर सिर्फ इस फैक्टर का इन्वर्स देखें तो इन्वर्स की वैल्यू होती है e to the power minus 3t ut, लेकिन अगर हम उसमें e to the power minus s मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्वर्स क्या होगा हमारा? e to the power minus 3 into t minus 1 into u of t minus 1। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हम इन्वर्स लिख सकते हैं इसका, that is equals to, it is y of s, and finally we are writing the expression of yt.
So it is 1 by 3 into, instead of ut, due to this factor multiplied with this, we will be writing the expression for inverse as u of t minus 1. And minus, again for this factor, we would be writing the expression as e to the power minus 3t ut only. But now due to this presence of this factor, we will be writing e to the power minus 3 into not t only, t minus 1 into u of t minus 1. So you can take t minus 1 common outside from both the terms, and the final result you can write as, the final expression for yt would be yt equals to 1 upon 3 into 1 minus e to the power minus of 3 into t minus 1 into u of t minus 1. So if you again see the options, there is in no option you can see u of t minus 1. That is, यहाँ पर आपको बताया नहीं गया कि ये एक्सप्रेशन सही है, किस टाइम इंस्टेंट के लिए नहीं बताया गया. तो ईएसई में ऐसी चीज़ें मैंने आपसे बार बार कहा कि ईएसई में ऐसा होता है, ऐसे आपको मिसिंग चीज़ें दिखेंगी, लेकिन फिर भी आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करनी है और गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस को आपको रिकवर करना है. तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि yt इज़ वॉट, yt इज़ 1 by 3 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ 3 इंटू टी माइनस 1. और यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर u ऑफ t माइनस 1 क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये हमारी वैल्यू है, लेकिन किसके लिए है, फॉर t ग्रेटर देन 1 हमारे पास ये वैल्यू. तो ये टर्म मिसिंग है ऑप्शन में, लेकिन ये फैक्टर जरूर होगा अगर आपके ऑप्शंस करेक्ट हैं. तो आपको ये सर्च करना है 1 by 3 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3 टी माइनस 1. सो 1 by 3 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3 ऑफ टी माइनस 1, मतलब ये ऑप्शन 1 ही करेक्ट. ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्या सभी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? 9 का ए, यस. सुमुखा और साई कृष्णा, आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं. कौशलेंद्र, अभिषेक, अभिनंदन, आप सभी के आंसर्स भी बिल्कुल करेक्ट हैं. वेरी गुड. तो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. ईएसई के एग्जाम में आपको यूटी वाले टर्म्स मिसिंग दिख सकते हैं. ठीक है, तो आपको अंडरस्टूड रखना है कि वहाँ पर खुद से वो टर्म अप्लाई करने के बाद आप फाइनल रिजल्ट तक पहुँचेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Consider the following statements for a periodic signal. Both the time, magnitude and phase spectra are line spectra. देखिए यहाँ पर क्या बोला गया. अच्छा, इसके साथ और देखिए, for real valued signals the magnitude spectrum has even symmetry. For real valued signals the phase spectrum has odd symmetry. तो तीन स्टेटमेंट्स गिवन है, पूछा गया इनमें से क्या करेक्ट होगा. ठीक है, जैसे ही हम बात करते हैं पीरियोडिक सिग्नल्स की, ठीक है, ये आपको पता है कि अगर हम टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन देखते हैं, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली मैंने हमेशा आपसे बात की है कि कोई भी चीज़ अगर एक डोमेन में पीरियोडिक है तो डेफिनेटली ये दूसरे डोमेन में क्या होगी, डिस्क्रीट होगी. डिस्क्रीट होगी मतलब हम इसका जब स्पेक्ट्रम बनाएंगे, चाहे हम मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बनाएं या हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम बनाएं, तो स्पेक्ट्रम हर जगह प्रेजेंट नहीं होगा. ये आपने देखा होगा कि के की कुछ वैल्यू के लिए इस तरह से हमारे पास के स्पेक्ट्रम्स होते हैं. ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब इसलिए क्या हो गया कि ये दोनों ही जो स्पेक्ट्रम्स होंगे वो लाइन स्पेक्ट्रम, और दो स्पेक्ट्रम्स को ही हम कॉमनली ये बोलते हैं तो स्पेक्ट्रा नाम देते हैं. ठीक है, तो इसलिए जब भी हम किसी भी पीरियोडिक सिग्नल के लिए स्पेक्ट्रम देखें, तो चाहे हम मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट करें या फेज स्पेक्ट्रम प्लॉट करें, वो एन की सभी वैल्यूज के लिए नहीं होता, एन की सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के लिए होता है. मतलब वो हमारा क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम. मतलब ये जो ए ऑप्शन है इट इज करेक्ट. बोथ द मैग्नीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा. इसके साथ आप ये भी देख चुके हैं, आपने अगर क्लासेस की होंगी मेरी या कहीं पर भी कि अगर सिग्नल रियल है तो उसमें मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम के केस में जब आप देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ माइनस ओमेगा. मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम क्या होता है, इवन सिमेट्रिक फंक्शन होता है रियल फंक्शंस के लिए. और ऐसे ही अगर आप फेज एंगल के लिए देखते हैं तो फेज एंगल ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा अगर आप देखते हैं तो ये माइनस ऑफ फेज एंगल ऑफ एक्स ऑफ माइनस ओमेगा. मतलब जो फेज स्पेक्ट्रम होता है वो हमेशा ऑड फंक्शन होता है. तो इसलिए आप अगर देखें तो ये ए ऑप्शन फर्स्ट स्पेक्ट्रम भी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और रियल वैल्यूड सिग्नल के लिए फेज है और सिमेट्री, ये थर्ड स्टेप ये भी करेक्ट है. मतलब जो ऑप्शन है आपका वो ये बी ऑप्शन आएगा कि 1 2 एंड 3 बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पावर ऑफ अ कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स. Power is the time average of energy.
द फर्स्ट स्टेटमेंट इज पावर इज द टाइम एवरेज ऑफ एनर्जी. यस, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज पावर. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. अ सिग्नल विथ फाइनाइट एनर्जी हैज जीरो पावर. बिल्कुल हमने बात की है कि अगर किसी सिग्नल में जो एनर्जी है अगर वो फाइनाइट है, इसका मतलब है उसका पावर जीरो है. अगर पावर कुछ भी है, अगर किसी सिग्नल में कुछ भी पावर है, तो एनर्जी आप उससे कितनी ले सकते हैं, पावर इनटू टाइम करके. अगर आप वो पावर अगर आप इन्फिनिटी टाइम तक ले लें तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी. तो अगर किसी सिग्नल में फाइनाइट एनर्जी है, इसका मतलब उसमें पावर कितना है, जीरो. इफ अ सिग्नल हैज फाइनाइट एनर्जी इट मीन्स इट हैज जीरो पावर. सो द स्टेटमेंट 2 इज अगेन इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. इसी तरह आप कहते हैं कि अगर एनर्जी, अगर हम बात करें कि अगर पावर, हमने कहा अगर एनर्जी फाइनाइट है तो पावर जीरो है. अगर पावर जीरो नहीं है, इसका मतलब उसमें एनर्जी कितनी होगी, इनफाइनाइट. क्योंकि हम अगर उसको इन्फिनिटी टाइम तक उतना पावर अगर हम लेते रहें तो एनर्जी कितनी आएगी हमारे पास, इन्फिनिटी. तो अगर हम थर्ड स्टेटमेंट देखा, सिग्नल विथ फाइनाइट पावर हैज इनफाइनाइट एनर्जी, इट इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया. नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, ऑल फाइनाइट पीरियोडिक सिग्नल. देखिए यहाँ पर क्या वर्ड लिखा हुआ है, फाइनाइट. आपने ये देखा है कि जितने भी पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल्स. कोई भी पीरियोडिक सिग्नल कभी भी एनर्जी सिग्नल नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, अगर उसके, हमने बात की है कि अगर एक पीरियड में कुछ भी एनर्जी है, अगर मान लीजिए कि हम, अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल है, तो उस पीरियोडिक सिग्नल के लिए मान लीजिए हमने कहा कि एक पीरियोडिक सिग्नल हम सिर्फ एक पीरियड बना रहे हैं. पीरियोडिक सिग्नल है, इसका मतलब ऐसे ऐसे इनफाइनाइट पीरियड्स हैं. इफ अ सिग्नल इज अ पीरियोडिक सिग्नल देन इट मस्ट एग्जिस्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. इट इज अ everlasting signal, so it has infinite number of such periods. And if it has any finite value of energy for one period, then it has infinite such periods. अगर इसके एक टाइम पीरियड में कुछ भी एनर्जी है नॉन जीरो, तो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट पीरियड्स हैं इसमें. इसका मतलब टोटल पीरियोडिक सिग्नल में कितनी एनर्जी होगी, इन्फिनिटी. तो कभी भी कोई पीरियोडिक सिग्नल एनर्जी सिग्नल हो ही नहीं सकता. ठीक है, इसलिए पीरियोडिक सिग्नल्स या तो पावर सिग्नल्स होते हैं या तो नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स होते हैं. ठीक है, तो जितने भी पीरियोडिक सिग्नल्स हैं जो कि अनबाउंडेड नहीं हैं, जो भी फाइनाइट हमारे सिग्नल्स हैं, जैसे मान लीजिए अनबाउंडेड का एग्जांपल आप अगर देखेंगे तो जैसे tan t अगर आपने ले लिया, tan x, तो tan फंक्शन भी हमारा क्या पीरियोडिक है, लेकिन अगर हम π/2 पर इसकी वैल्यू देखें तो कितनी है, इन्फिनिटी. तो ये हमारा बाउंडेड सिग्नल नहीं है, इन्फिनिट, ये हमारा फाइनाइट सिग्नल नहीं है. या आप इम्पल्स ट्रेन की बात करें, इम्पल्स ट्रेन भी एक पीरियोडिक सिग्नल है. इम्पल्स ट्रेन डायरेक्ट डेल्टा कॉम इज अ पीरियोडिक सिग्नल, बट ऑल ऑफ इट्स इम्पल्सेस इन एन इज एन अनबाउंडेड सिग्नल इन इटसेल्फ. जितने भी उसमें इम्पल्सेस हैं सभी सिग्नल्स अपने आप में क्या हैं, वो अनबाउंडेड सिग्नल्स हैं, फाइनाइट नहीं है सिग्नल. तो इसलिए अनबाउंडेड जो भी हमारे पीरियोडिक सिग्नल्स हैं वो नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स होते हैं. लेकिन जितने भी बाउंडेड पीरियोडिक सिग्नल्स हैं वो सभी के सभी सिग्नल्स क्या होते हैं, पावर सिग्नल्स होते हैं. तो अगर यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ड मिसिंग होता तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल्स. लेकिन अगर यहाँ पर फाइनाइट वर्ड लगा हुआ है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ऑल फाइनाइट पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल्स. मतलब ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया. तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 एंड 4 ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, मींस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. तो ये जो कुछ थ्योरी के क्वेश्चन है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें अगले बार जब क्वेश्चंस आएंगे तो इनमें से कहीं दो को लेकर के एक नया क्वेश्चन बना दिया जाएगा. तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए. क्या किसी को कोई डाउट इसमें? समीक्षा, आपका आंसर करेक्ट है. अभिषेक, अभिनंदन, सुमुखा, आप सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं. ठीक है, अभिनंदन. फाइनाइट मतलब मैग्नीट्यूड और टाइम सर. देखिए यहाँ पर फाइनाइट सिग्नल जो है वो अलग अलग सेंस में बोला जाता है. आप जब फाइनाइट की बात करते हैं तो फाइनाइट हमारा सिग्नल जिसका जो कोफिशिएंट है वो फाइनाइट है, मतलब जो एम्पलीट्यूड की बात की जा रही है यहाँ पर. लेकिन नॉर्मली जो आप बुक्स में देखेंगे बहुत जगहों पर फाइनाइट सिग्नल मतलब फाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करने वाले सिग्नल्स को भी फाइनाइट सिग्नल बोला जाता है. लेकिन पीरियोडिक सिग्नल क्या कभी फाइनाइट हो सकता है? अगर हम टाइम की बात करें तो कोई पीरियोडिक सिग्नल क्या कभी टाइम में फाइनाइट हो सकता है? नहीं हो सकता. तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या अज्यूम किया कि हम फाइनाइट का मतलब क्या समझेंगे, यहाँ पर हम फाइनाइट सिग्नल का मतलब समझेंगे. अगर पीरियोडिक सिग्नल की बात की जा रही है तो फाइनाइट का मतलब हम समझेंगे जो बाउंडेड पीरियोडिक सिग्नल्स हैं, और इसलिए उनको हमने कहा कि वो सभी बाउंडेड सिग्नल्स क्या होंगे, पावर सिग्नल्स होंगे. ठीक है, चलिए बहुत अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एवरेज पावर इन द यूनिट एम्पलीट्यूड स्क्वायर वेव ऑफ पीरियड टी एंड 50% ड्यूटी साइकिल. 50% ड्यूटी साइकिल का मतलब 50% टाइम ऑन है, 50% ऑफ है. मतलब अगर हम स्क्वायर वेव की बात कर रहे हैं मतलब हमारे पास ये ऐसा सिग्नल, कैसा,
जिसमें अगर हम टी टाइम पीरियड मान लें तो टी टाइम में से t/2 टाइम तक के लिए ये वैल्यू हमारी कितनी है बताया गया। यूनिट एम्पलीट्यूड मतलब इसका एम्पलीट्यूड 1 है। अगर हम कहें कि हमारे पास कोई एफ ऑफ टी फंक्शन है तो 50% ड्यूटी साइकिल का मतलब है t/2, 0 से t/2 तक अगर 1 है तो t/2 से t तक हाफ ऑफ द टाइम पीरियड ये हमारा 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ये इस टाइप से हमारे पास ये सिग्नल, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम -∞ टू +∞। पूछा गया इसके लिए पावर की वैल्यू क्या होगी। देखिए पावर निकालना ये आप जानते हैं कि ये तो हमारे पास एक्सप्रेशन है कि पावर ऑफ एफ ऑफ टी क्या लिखते हैं हम, इंटीग्रेशन, अगर हम किसी पीरियोडिक सिग्नल के लिए पावर लिख रहे हैं तो 1/t, 0 से t ले लें, किसी भी एक टाइम पीरियड के लिए ले लें, ठीक है, 0 से t ले लें, -t/2 से +t/2 ले लें, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ टी होल स्क्वायर dt, ठीक है। तो ये आपको पावर की वैल्यू दे देगा, ठीक है, ये तो आप कर ही सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, पावर। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब भी पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए पावर आपसे पूछा जाए, और हमने बार बार बात की है कि अगर वो सिग्नल आपको दिख रहा है कि एक टाइम पीरियड में वो रेक्टेंगुलर है या ट्रायंगुलर है या सिंक फंक्शन, इस टाइप की अगर चीज़ें आपको गिवन हैं, तो इस पावर को हम और कैसे फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द पावर ऑफ एनी पीरियोडिक सिग्नल एज एनर्जी इन वन पीरियड डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, ठीक है। अब कुछ 2-3 सिग्नल्स के लिए बात आप बहुत अच्छे से याद रखिए। जैसे हमारे पास एक ये सिग्नल है रेक्टेंगुलर फंक्शन, अगर ये -τ/2 से +τ/2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, एम्पलीट्यूड अगर इसका a है, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं a रेक्टेंगल ऑफ t/τ, ठीक है, ये जानते हैं आप। एक रेक्टेंगुलर फंक्शन जिसकी टोटल विड्थ टाउ है, it is a rectangular function whose total width is tau and amplitude during this tau duration is a, so it is represented as a rectangle of t/τ। अगर हमारे पास एक ट्रायंगुलर फंक्शन है, for rectangular function the tau is total width and for a triangular function the tau is half width, so if it is -τ to +τ, it is existing from -τ to +τ with peak value a, then this function is represented as a triangle of t/τ. So for this function, area, energy, area is a into tau, energy is a square tau. For triangular function, area is again a tau and energy is 2a square tau by 3. Few more important signals we can discuss. E to the power -at ut, area is 1/a, energy is 1/2a. For sinc of t or e to the power -a mod of t, area is 2/a, energy is 1/a. For sinc of t, that is sin pi t upon pi t, area is 1 as well as energy is 1. For sampling of t, that is sin t upon t, area and energy. As we know, if area of x of t is a, then area of x of alpha t, if we perform the time scaling, then area is get divided by the scaling factor, same as with energy also. So if we say sin of t upon t, it is sampling of t, and sinc of t we have written sin pi t upon pi t. So sampling of t is also, it can also be written as sinc of t upon pi. It means if we apply a time scaling of 1/pi on sinc function, then we will be getting sampling function. So if the area and energy of sampling sinc function is 1, so the area and energies of sampling function would be 1 upon this scaling factor, then the scaling factor is 1/pi. So 1/1/pi will give you pi.
similarly the energy will also be 1/1 pi, that will be giving you pi only. If we take one more function, that is e to the power minus pi t square, that is a Gaussian function. So for a Gaussian function, area is 1 and energy is 1 by root 2. In case of discrete, you can also remember for a to the power n un. For this function, area value is 1/1 minus a and energy value is 1/1 minus a square. For a to the power mod of n, you can write 1 plus a upon 1 minus a and 1 plus a upon 1 plus a square upon 1 minus a square. So if you keep in mind these functions, then wherever there is a rectangular function, then you just have to note down its total width and its amplitude, and the energy will be amplitude square multiplied with its total width. So what we are having here, we have to find the power of this function, periodic function f of t, which has 50% duty cycle. It is a square wave. So energy in one period, for its one period, it is 0 in the half of the time period from t by 2 to t, and in the remaining half it is a square wave. It is a rectangle. For this rectangle, a, that is amplitude value, is 1 and the total width of this rectangle tau, that is equals to t by 2. So energy of this function during this time interval 0 to t by 2, or you can say for its one complete period 0 to t, the energy will be what? Energy is a square tau. For this function, energy equals to a square tau, that is equals to 1 square into tau value is t by 2. So the energy is t by 2. So in one time period, energy equals to t by 2. So you can write t by 2 divided by total time period t, and that is equals to 1 by 2, that is equals to 0.5 joules. So the correct option is what? Option C is correct. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन इतना कोई टफ था. बात ये है कि जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन अगली बार आएगा. अगली बार जो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसा आपके पास ट्रायंगुलर वेव का आ सकता है. पीरियोडिक ट्रायंगुलर वेव गिवन है, उसका पावर निकालना है. तो इजीली आप कैसे कर सकते हैं, एक टाइम पीरियड लीजिए, एक ट्रायंगल की एनर्जी निकाल लीजिए, एक टाइम पीरियड की एनर्जी मिल गई, तो उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर दीजिए, आपको उस फंक्शन का पावर मिल जाएगा. ठीक है, तो सभी के लिए ऑप्शन आ गया होगा. मैंने यहाँ पर कुछ और आपके लिए लिख दिए हैं, ये अगर आप याद रखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको आसानी रहेगी. ठीक है, 12C इज करेक्ट. तो अभिनंदन बिल्कुल आपका करेक्ट है. सुमुखा, आपका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर क्वार्टर वेव सिमेट्री. देखिए क्वार्टर वेव सिमेट्री क्या होती है. क्वार्टर वेव सिमेट्री, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म क्वार्टर वेव सिमेट्री? इफ अ फंक्शन इज क्वार्टर वेव सिमेट्रिक, देन देखिए आपके पास जो भी क्वार्टर वेव सिमेट्री होती है, इसको आप इवन प्लस हाफ वेव या ऑड प्लस हाफ वेव, जब आपके कोई सिग्नल सिमेट्री फॉलो करता है, इसका मतलब अगर कोई सिग्नल क्वार्टर वेव सिमेट्रिक है तो डेफिनेटली या तो वो इवन है या तो ऑड है, और उसके साथ साथ उसमें क्या कंडीशन फॉलो हो रही होगी, हाफ वेव सिमेट्री फॉलो हो रही होगी. तो हाफ वेव सिमेट्री डेफिनेटली फॉलो होनी चाहिए. हाफ वेव सिमेट्री क्या होती है, अगर हम किसी फंक्शन को हाफ ऑफ द टाइम पीरियड शिफ्ट कर दें तो वो सिग्नल क्या हो जाए, अपने नेगेटिव के बराबर हो जाए. मतलब ये हमें कैसा दिखना चाहिए, माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी दिखना चाहिए. ठीक है, अगर हम हाफ ऑफ द टाइम पीरियड से शिफ्ट कर दें तो वो सिग्नल क्या हो जाएगा, अपने नेगेटिव के बराबर. तो ये हाफ वेव सिमेट्री, ये भी फॉलो होनी चाहिए. और इसके साथ साथ क्या होनी चाहिए, फंक्शन मस्ट बी इवन और ऑड. इट मीन्स आइदर एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी. जब ये दोनों चीजें साथ साथ, ये हमारी कंडीशन 1 और ये हमारी कंडीशन 2, जब ये दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो होती है तो वो सिग्नल क्या होता है, क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल होता है. और अगर कोई सिग्नल क्वार्टर वेव सिमेट्रिक है तो उसके लिए एक और चीज क्या याद रखनी है आपको, इफ एक्स ऑफ टी इज क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल, देन इफ एक्स ऑफ टी इज इवन एंड इफ एक्स ऑफ टी इज ऑड. क्योंकि हमने दो कंडीशन कही है, अगर
एक्स ऑफ टी क्वार्टर वेव सिमेट्रिक है, मतलब ये दो कंडीशन तो डेफिनेटली होंगी ही कि वो हाफ वेव सिमेट्री को फॉलो करेगा, साथ साथ वो इवन या ऑड की सिमेट्री को फॉलो करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे साथ ये भी चीज़ है, इसमें आप फाइंड करेंगे कि अगर वो सिग्नल इवन है देन एक्स ऑफ टी प्लस या माइनस टी बाई 4 अगर करेंगे विल बी एन ऑड सिग्नल, और अगर वो सिग्नल एक्स ऑफ टी ऑड है देन अगर हम इस सिग्नल को t प्लस या माइनस टी प्लस टी बाई 4 से अगर हम शिफ्ट करेंगे विल बी एन इवन फंक्शन। तो क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल के लिए तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्वार्टर वेव अगर से कोई सिग्नल है इसका मतलब है कि वो हाफ वेव सिमेट्रिक तो है ही, और उसके साथ साथ उसमें क्या फॉलो हो रही है, इवन या ऑड की प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, ठीक है। और अगर आपको पता चल गया कि कोई सिग्नल क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल है तो उस सिग्नल को अगर हम t प्लस माइनस टी बाई 4 करेंगे एक्स ऑफ, अगर हम उसमें प्लस माइनस टी बाई 4 की शिफ्टिंग करेंगे तो अगर पहले सिग्नल इवन था तो ऑड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर पहले सिग्नल ऑड था तो इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। So now if we read the statements for a quarter wave periodic signal, it has either odd or even symmetry. It is absolutely correct. If simultaneously both these two property will be followed, then only the function may be a quarter wave symmetric signal. So it must be an even or an odd function. And with this condition, the next condition must be followed is it should be a half wave symmetric signal. It must be a half wave symmetric. So it is half wave symmetric signal. It is absolutely correct. So in this case, both these two statements are correct. Hence, 1 and 2, both statements are correct is the correct option. So option A is correct. तो बिल्कुल सही सुमुखा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 13 का ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कन्वोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग टू सिग्नल्स। अब यहाँ पर हमें एक एक्स ऑफ टी गिवन है, एक एच ऑफ टी गिवन है, और इन दोनों का कन्वोल्यूशन हमें निकालना है वाई टी। वी नो दैट वाई टी इज इक्वल्स टू x of t convolved with h of t, and we also know that if any function is convolved with impulse function then it results in itself, and if the next property of convolution is if there is any shifting in either the impulse function or in the x of t, then the net shifting will be reflected in the result of convolution, that is x of t convolved with del of t minus t naught equals to x of t minus t naught, or better to take plus or minus sign. So x of t convolved with del t is xt only, and x of t convolved with del of t plus minus t naught is x of t plus minus t naught. So we have to find yt, the convolution of these two signals. So yt is equals to whatever x of t is, we can write it as it is, and at the place of h of t, if we see here, it is given to be combination of two impulse functions del of t plus 1 and 2 times del of t plus 2. Now we can use the distributive property of convolution, and individually we can convolve this function first with del of t plus 1, then we will placing the sign as given in between, and then we will be convolving x of t with 2 times del of t plus 2. So it will give you x of t convolved with del of t plus 1 will result in x of t plus 1 and plus 2 times it is x of t plus. So accordingly the correct option is x of t plus 1 plus 2 times x of t plus 2, that is option C is correct. X of t plus 1 plus 2 times x of t plus 2. Hope every one of you is getting the point. Next question is, which one of the following statements is not correct for convolution? How you find convolution? The basic expression for convolution, let's say we have to find yt, that is x of t convolved with h of t. Then mathematically this expression, this symbol convolution is represented as integration from minus infinity to plus infinity x of tau h of t minus tau deta. So basically what you are doing is you are taking the area of the product of two functions. First one, any function can be taken as it is, and in the other function you have to apply two properties. First one is change the base from t to tau, and then the time reversal on this function and the shifting with t.
तो यहाँ पर जैसा आपने मल्टीप्लिकेशन में देखा है बिल्कुल वैसा ही कॉन्वोल्यूशन में भी होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एक्स टी, एच टी और वाई टी की बात करें तो इवन इवन, इवन ऑड, ऑड इवन और ऑड ऑड की अगर आप बात करते हैं तो जैसा मल्टीप्लिकेशन में होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में आप अगर करते हैं तो इवन को पॉजिटिव और ऑड को नेगेटिव मान ले अगर, तो जैसे यहाँ पर प्लस इंटू प्लस प्लस, तो ऐसे ही यहाँ पर भी इवन और इवन का कॉन्वोल्यूशन इवन ही होता है। इवन और ऑड यानी प्लस और माइनस का कॉन्वोल्यूशन क्या होगा, ऑड होगा। ऑड और इवन का भी क्या होगा, ऑड होगा। और ऑड और ऑड का क्या होगा, इवन होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑड एंड इवन, ऑड करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। टू ऑड फंक्शन, ऑड एंड ऑड का क्या होना चाहिए, इवन, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू इवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, टू इवन है तो इवन, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू ऑड फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, टू ऑड फंक्शन माइनस इंटू माइनस से आप याद रख सकते हैं क्या होगा, इवन होगा, प्लस होगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। आपको चुनना क्या है, नॉट करेक्ट ही बोला गया चुनने के लिए, तो नॉट करेक्ट बोला गया इसलिए यही ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। मतलब ऑप्शन आप क्या सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is the final value of function ft that is e to the power minus 2t sin 5t ut। देखिए जैसे अगर हम ये तो जानते ही इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, लिमिट t टेंडिंग टू 0 f ऑफ t, और फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है, लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ t। ये तो हमें पता है कि अगर हम लैप्लास हमारे पास है, इफ वी आर हैविंग Laplace transform of any function, then without knowing the time domain of the function we can say its final and initial values. So limit t tending to 0 of t is given as limit s tending to infinity s times f of s, the Laplace transform of ft, and here it is limit s tending to 0 s into f of s। लेकिन यहाँ पर इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहते तो बिल्कुल देख सकते थे कि जैसे एफ टी अगर है हमारे पास तो ये आपको पता होगा कि ई टू द पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा नॉट टी यू टी, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा नॉट अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, दिस इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो या तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो एफ ऑफ एस आएगा वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस ई टू द पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट इज 5, ए इज 2, तो अगर आप वहाँ पर पुट करते हैं तो ओमेगा नॉट दैट इज 5 अपॉन एस प्लस ए दैट इज एस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो इट इज एफ ऑफ एस। तो अगर आपको आपसे फाइनल वैल्यू अगर पूछी गई है तो फाइनल वैल्यू के लिए आप ये यूज करेंगे, तो एफ ऑफ इन्फिनिटी इज व्हाट, दैट इज लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी f of t is what, limit s tending to 0 s into this f of s is 5 upon s plus 2 whole square plus 5 square. So we can see that in this function if you put s equals to 0 then it will result in 5 upon 2 square plus 5 square, but it is multiplied with s and we are taking s equals to 0. So if we put s equals to 0 here then this complete value will result into be 0. तो ये तो हमारे पास इस इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम से हमारे पास ऑप्शन आ गया। लेकिन आप डायरेक्टली देखते कि ये जो फंक्शन है e टू द पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा नॉट टी यू टी, या जो भी आपके पास गिवन है साइन 5 टी यू टी, अगर आप इसका ग्राफ देखें ये भी आपको पता होगा कि इसका ग्राफ कैसा आएगा। ये आपको एक डिकेइंग साइनसॉइडल फंक्शन देता है, मतलब ये जो फंक्शन है ये इस टाइप का आपका ये फंक्शन, ड्यू टू दिस फैक्टर ई टू द पावर माइनस 2t, जैसे जैसे आप टाइम में वैल्यू में आगे की तरफ जाएंगे ई टू द पावर माइनस 2t, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, जैसे जैसे t की वैल्यू इंक्रीज करेगी, एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ t, दिस फंक्शन ई टू द पावर माइनस 2t विल टेंडिंग टू 0, सो it is your function given function f of t. So if you see directly the value of e to the power minus 2t at t tending to infinity will be 0, and if it is multiplied with any other function then this complete function will result into 0 only at time t tending to infinity.
So the final value of this function must be what? 0. That is option E is correct for question number 16. तो इतने के थ्रू आपको नहीं जाना चाहिए था इस टाइप के क्वेश्चन में। बिल्कुल मेरा काम है कि मैं आपको बताऊं इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, और उसको यूज़ करके तो आएगा ही आंसर, लेकिन जैसे ही आपको कोई फंक्शन ऐसा दिखता है तो आपको ये समझ जाना है कि फाइनल वैल्यू मतलब हमें इस फंक्शन की वैल्यू टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर देखनी है, और अगर उसमें कोई भी ऐसा फंक्शन मल्टीप्लाइड है जिसकी वैल्यू टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0 हो जाए या इन्फिनिटी हो जा रही है, इसका मतलब आप वहाँ से बता सकते हैं कि वैल्यू क्या होगी। अगर यहीं पर यह माइनस साइन नहीं होता, इफ there will be the function ft equals to e to the power plus 2t sin 5t ut, then its final value will be what? It is an unbounded signal, then final value is not applicable and the result will be infinity. Next question, the fundamental period of complex signal xt is e to the power j omega naught t. Time period and frequency omega naught is related by the expression t is equals to what? 2 pi upon omega naught. So it is the basic expression what is to be find out. So 2 pi upon omega naught option A is correct. Okay, तो मुझे लगता है आप सभी लोग कर पा रहे होंगे इन सभी क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व। बिल्कुल सुमुखा, आपके सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पूछा गया एनर्जी कंटेन्ड ऑफ द सिग्नल xt। डायरेक्टली नाउ वी कैन फाइंड आउट e टू द पावर minus 80 ut. What we have discussed is its area value is 1 upon A and energy value will be 1 upon 2A. So the value of A is 2, therefore area is 1 upon 2 and energy is 1 upon 2 into 2, that is 1 by 4. So in seconds you can find out the energy equals to 1 by 4. Otherwise, if you want to go with the process, then energy of x of t is given as what? Integration minus infinity to plus infinity magnitude of x of t whole square dt. As this function is containing ut, it means it is present only during the interval 0 to infinity. So the value of integral will be 0 to infinity, and in between this interval the function is e to the power minus 2t. If you keep on squaring this function e to the power minus 2t whole square, then it will be resulting into e to the power minus 4t. So if you integrate this function e to the power minus 4t dt over 0 to infinity, then again you will be getting 1 by 4 only. So in any of the methods, by any of the methods you can find the answer to be 1 upon 4. Next question, question number 19. Which of the following is a useful property of the unit impulse signal del of t? Here time scaling property of impulse function is given, and you must be knowing that del of alpha t is equals to 1 upon mod of alpha times del of t in case of continuous time function. But in case of discrete, del of alpha n is what? It is nothing but del of n only. You can directly discard this scaling factor, but as here it is asked to be the continuous time function, impulse function, so del of alpha t is 1 upon mod alpha del of t is correct. Option D is correct. Next, which one of the following is correct for the system represented by the relation yt is equals to x of sin t, where x of t and yt are input and output respectively? So you can see here yt is given to be x of sin t. It is, if you apply, it is given that if you apply an input x of t in a particular system, then its response is yt, and yt is what? You are changing the input t, variable t in the input by sin t. So it is the case of non-linear scaling, and you must be knowing that whenever that scaling is involved, in case of ये जो हमारे पास है, यहाँ पर हम ये क्या बात कर रहे हैं कि अगर आप t को x of t में t को रिप्लेस कर रहे हैं sin t से, मतलब ये हमारे पास क्या है? नॉन लीनियर स्केलिंग का केस है। मतलब हम ये बात कर रहे हैं स्केलिंग के लिए, जैसे अगर हम xt से मान लीजिए कि हम कर दें x of 2t, या अगर हम कर दें x of minus t, तो ये जो है इसको हम कहते हैं लीनियर स्केलिंग। लीनियर स्केलिंग कर रहा है, ठीक है। t में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया आपने कांस्टेंट, जैसे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, -1 मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन x ऑफ t में t को रिप्लेस कर देना t स्क्वायर से, या रिप्लेस कर देना sin t से,
ठीक है, ये सभी इस टाइप की जो स्केलिंग है, या एक्स ऑफ टी में टी को रिप्लेस करना, कोई भी आप इस टाइप की चीज अगर देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं ये हमारा क्या है, नॉन लीनियर स्केलिंग का केस है। और आपको क्या याद रखना है कि इन केस ऑफ any kind of scaling, in case of any kind of scaling, if any kind of scaling is involved, the system will be definitely dynamic, no need to check, dynamic, non-causal and time variant. अगर आपने कहीं भी आइडेंटिफाई कर लिया कि इनपुट आउटपुट रिलेशन जो आपके पास गिवन है उसमें अगर स्केलिंग इन्वॉल्व है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये सिस्टम कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता, डेफिनेटली एक डायनामिक सिस्टम होगा। ये सिस्टम कभी भी कॉजल नहीं हो सकता, हमेशा ही नॉन कॉजल होगा, और कभी भी ये टाइम इनवेरिएंट भी नहीं हो सकता, हमेशा ही सिस्टम क्या होगा, टाइम वेरिएंट होगा। तो अब यहाँ पर जैसे आपने देख लिया कि ये सिस्टम हमारे पास क्या पूछा गया, लेकिन एक और चीज आपको पता है, बट लीनियर स्केलिंग से लिनियरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केलिंग से लिनियरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास चाहे लीनियर स्केलिंग हो या नॉन लीनियर स्केलिंग हो, सिस्टम हमेशा ही हमारा क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें क्या क्या पूछा गया है, कॉजलिटी और लिनियरिटी के बारे में पूछा गया। तो ये सिस्टम डेफिनेटली लीनियर सिस्टम होगा क्योंकि सिर्फ स्केलिंग परफॉर्म की जा रही है। यहीं पर अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसा लिखा होता कि वाई टी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स ऑफ टी, तो ये सिस्टम क्या हो जाता, नॉन लीनियर हो जाता। नॉन लीनियर यहां पर मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास होता है कभी भी वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स के अंदर कोई बेसिक फंक्शन, जैसे एक्स के अंदर साइन टी कॉस टी, ये क्या है, बेसिक फंक्शन है, साइन टी कॉस टी यू टी मॉड, ये सभी क्या है, बेसिक फंक्शन। तो अगर एक्स के अंदर कोई बेसिक फंक्शन लिखा हुआ है तो ये सिस्टम क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है वाई टी इज इक्वल्स टू किसी बेसिक फंक्शन के अंदर एक्स ऑफ टी, किसी बेसिक फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ टी, तो ये सिस्टम्स क्या होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं। ठीक है, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं, वैसे भी आप चेक करते हैं अगर कॉजलिटी के लिए, जैसे आप यहां पर अगर t इज इक्वल्स टू पाई पुट करेंगे या मान लीजिए माइनस पाई पुट करेंगे, अगर आप यहां से देखते हैं t इज इक्वल्स टू माइनस पाई पर, माइनस पाई सेकेंड्स पर का जो आउटपुट है वो इनपुट में किस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर आपने यहाँ t की जगह माइनस पाई पुट किया तो यहाँ भी t को रिप्लेस कर दीजिए पाई से, माइनस पाई से। साइन ऑफ माइनस पाई, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, एंड साइन पाई इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये वैल्यू किसके बराबर होगी, x ऑफ 0। इसका मतलब इफ यू हैव टू फाइंड आउट द आउटपुट एट टाइम t इज इक्वल्स टू माइनस पाई, हियर इट इज द टाइम एक्सिस, हियर इट इज फॉर वैल्यू ऑफ t, it is minus pi and it is 0. If you have to find out the output at t is equals to minus pi, then you must be knowing the value of input at t is equals to 0, which is the future input with respect to the time instant minus pi. Therefore, this system is what? It is non-linear, non-causal. If any kind of scaling is involved, then definitely this system is what? It is non-causal but linear. As we have already discussed, linearity do not have anything to do with the scaling. You can perform any kind of scaling on input, either linear or non-linear, the system will be linear only. But whenever scaling is involved, the system is definitely non-causal, dynamic and time variant. So the system is non-causal and linear. Non-causal and linear, option B is correct. ठीक है, तो आप सभी को ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली ये ध्यान में रखना है, और 20 का ऑप्शन भी बिल्कुल सुमुखा आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट 1, अ सिस्टम इज एलटीआई इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सिग्नल कॉल्ड द सिस्टम यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इम्पल्स रिस्पॉन्स एग्जिस्ट ओनली फॉर एलटीआई सिस्टम्स, एंड conversely you can say that if a system is LTI, then definitely its impulse response must be existing. So system is LTI if and only if there exists a signal called the system impulse response. It will be, इसका मतलब क्या है, impulse response is what? Response of the system for impulse input. A system may be LTI only if
there is the possibility to find its output for a unit impulse function. So statement 1 is correct. Statement 1 is correct. That is, it is a assertion reasoning question, I think. So here it is given in assertion that a system is linear LTI if and only if its impulse responses can be obtained. So it is correct. And the reasoning statement 2 is the output of a discrete time LTI system is equal to the convolution sum between the input signal and its impulse response. So both the options are correct, and it is the correct explanation of A as well. Because why impulse response must be known for LTI system? Because if you have to find output of any LTI system for any arbitrary input, then output of any LTI system can be obtained only if impulse response is known. If you convolve the input with the impulse response, then only the output of LTI system can be obtained in time domain. So both those statements are correct, and statement 2 is the correct reasoning for statement 1. Hence the option is correct, option is A. यहाँ पर बोला गया आपसे कि एक LTI सिस्टम अगर हमारे पास होता है तो तभी कोई सिस्टम LTI हो सकता है जब उसका यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स एग्जिस्ट करे। तो बिल्कुल सही है, अगर LTI सिस्टम होगा तो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स एग्जिस्ट करना ही चाहिए। और क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम उसका आउटपुट कैसे बताएंगे? क्योंकि LTI सिस्टम के लिए हमारा आउटपुट हम फाइंड ही कैसे करते हैं? अगर ये LTI सिस्टम है तो हमेशा ही इसका कुछ इम्पल्स रिस्पॉन्स, जैसे डिस्क्रीट के लिए बोला गया तो मान लेते हैं HN है, इनपुट xn है, तो आउटपुट कैसे लिखते हैं अब? yn इज xn कन्वॉल्व विथ hn, yn इज xn कन्वॉल्व विथ hn, ठीक है। तो अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स नोन नहीं होगा तो हम आउटपुट कैसे फाइंड करेंगे? तो इसलिए हमेशा ही LTI सिस्टम के लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स एग्जिस्ट करता है, और आउटपुट हम कैसे बताते हैं? LTI सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ कॉन्वोल्यूशन से। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और ये इसका करेक्ट रीजनिंग भी है। तो ऑप्शन हमारा जो होना चाहिए वो असर्शन रीजनिंग के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द ऑटो कोरिलेशन ऑफ द एनर्जी सिग्नल xt दैट इज e⁻t ut। अब देखिए यहाँ पर जो आपको समझ में आना चाहिए, ये हमारा कैसा फंक्शन है? ये हमारा एक रियल सिग्नल है। वैसे अगर आप ऑटो कोरिलेशन फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, तो आप r(x(x) ऑफ टाउ, x ऑफ t का x ऑफ t के साथ अगर आप ऑटो कोरिलेशन लिखते हैं, देन इट इज -∞ टू +∞, x ऑफ t इंटू x ऑफ t प्लस टाउ dt। देखिए कॉन्वोल्यूशन में बेस टाउ होता है, यहाँ पर बेस क्या होता है? t होता है, ठीक है। बेस क्या है? t है। यहाँ पर टाउ की शिफ्टिंग होती है। कॉन्वोल्यूशन में बेस टाउ होता है, शिफ्टिंग किसकी होती है? t की होती है। अब अगर रियल सिग्नल है कोई भी x ऑफ t, तो हम यहाँ पर फॉर, ये भी आपको पता होना चाहिए, फॉर रियल x ऑफ t, अगर x ऑफ t रियल है तो उसके केस में जो हम कन्वोल्यूशन फाइंड करते हैं ऑटो कोरिलेशन r(x(x) ऑफ टाउ, इट कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द कन्वोल्यूशन। अगर हम x ऑफ t को x ऑफ -t के साथ कन्वॉल्व कर ले, उस फंक्शन को उसी के टाइम रिवर्स फंक्शन के साथ कन्वॉल्व कर ले, तो हमें क्या मिल जाता है? उसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन मिल जाता है। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड के थ्रू जा सकते हैं, इसके थ्रू भी जा सकते हैं, इसके थ्रू भी जा सकते हैं ऑटो कोरिलेशन फाइंड करने के लिए। इसके थ्रू जाएंगे तो आप प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, किसमें? फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ से देखें तो आप ये कह सकते हैं, अगर हम इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म ले लें, फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ r(x(x) ऑफ टाउ, पहले हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में फाइंड कर लेते हैं और फिर हम इनवर्स ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अगर हम इस रिलेशन पर फुरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें तो x ऑफ t का फुरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा, कॉन्वोल्यूशन विल रिजल्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन, और इसके बाद x ऑफ -t का फुरियर ट्रांसफॉर्म क्या? x ऑफ माइनस ओमेगा। तो अगर xt हमारे पास e⁻t ut, तो इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं x ऑफ ओमेगा कितना है? 1/e⁻-at ut का आपको पता है, e⁻-at ut, इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/a + j ओमेगा होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू 1 देख रहे हैं तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 1/1 + j ओमेगा होगा, ठीक है। तो ये आपका x ऑफ ओमेगा आपको पता है। अगर हम ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दें तो x ऑफ माइनस ओमेगा क्या मिल जाएगा हमें? 1/1 - j ओमेगा मिल जाएगा। तो आपको x ऑफ ओमेगा भी पता है, x ऑफ माइनस ओमेगा भी पता है, तो फुरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता चल गया ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का। ऑटो कोरिलेशन का फुरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ गया? 1/1 + j ओमेगा
plus 1 upon into 1 upon 1 minus j omega. So a minus b into a plus b is a square minus b square. That is equals to what? 1 upon a square, that is 1 ka square, and minus of b square, that is minus of j omega whole square. So j square will result into minus 1. So it will be 1 plus omega square. So it is equals to 1 upon 1 plus omega square. Now we have to take inverse Fourier transform because we have to find out the correlation, autocorrelation in time domain. So if the Fourier transform is to be, we have find that Fourier transform of Rxx of tau. Fourier transform of the autocorrelation function is obtained as 1 upon 1 plus omega square, and we have to find out its inverse Fourier transform to get the autocorrelation in time domain. So if you remember the Fourier transform of e to the power minus a mod of t, then it is going to be 2a upon a square plus omega square. If you have to take inverse of this function, then compare the denominators. A square plus omega square, here it is 1 plus omega square. It means if you put a equals to 1, then e to the power minus of mod of t, the Fourier transform must be what? 2 into a, that is 1 upon 1 plus omega square. T or omega are dummy variables. You can represent any other also, as you are taking tau here, Rxx of tau. It means you have to find out in terms of tau. So you can take here at the place of t, you can take tau. So if we take the Fourier transform of e to the power minus of mod of t, then it will be 2 upon 1 plus omega square. But what we are having is 1 upon 1 plus omega square. That is, if you remove 2 from this side and you have to take only 1 upon 1 plus omega square, then the inverse of this function will be what? Take this to this side, then it will be 1 upon 2 times e to the power minus of mod of t. So if we take the time domain function in terms of t, then we will be writing 1 by 2 e to the power minus of mod of t. As here we have to write in terms of tau, therefore you can write Rxx of tau is equals to 1 by 2 times e to the power minus of mod of tau. Autocorrelation depends only on the shift between the two functions, only on tau. So 1 by 2 times e to the power minus of mod of tau is correct. So 1 by 2 times e to the power minus of tau, mod of tau, that is option D is correct. You can use this expression also. इस तरह से भी आप जा सकते हैं बिल्कुल. यहाँ से आप ये देखेंगे कि आपको दो केसेस में ये चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी. एक फॉर टाउ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक लिमिट आपको लेनी पड़ेगी, और एक लिमिट हमें लेनी पड़ेगी टाउ लेस देन 0. दोनों के लिए आप अगर इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेंगे तो आपको सेम रिजल्ट वहाँ से भी मिल जाएगा. क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो हम इसको सेकंड मेथड को स्किप कर रहे हैं. अदरवाइज आप अगर कभी भी कहेंगे तो हम वैसे भी नेक्स्ट सेशन में भी हम कर सकते हैं. जब भी आप कहेंगे एक और मेथड हम देख सकते हैं. क्या ये सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. इफ द इनपुट सिग्नल इज xn इज सिंक ऑफ, इट इज नॉट साइन सी, इट इज सिंक ऑफ ओमेगा cn अपॉन पाई, then what is the energy of the signal? Assume omega c is less than pi. Definitely. Okay, what we have given is x of n is sinc of omega cn upon pi. Sinc of x is what? You must be knowing the definition. Sinc of x is sin pi x upon pi x. So at the place of x we are having sinc of x, at the place of x we are having omega cn upon pi. So x of n, that is given to be sinc of omega cn upon pi. Taking this as the place of x, it may be written as sine of pi into this value, that is omega cn upon pi into pi, sine pi x upon pi x, that is omega cn upon pi into pi. So it is the given function for which we have to find out the energy. Okay, now if you see, these two got cancelled here also. So x of n, given x of n function is what? It is sine omega cn upon omega cn. The actual function is sine of omega cn upon omega cn. Now you have to find out the energy of this function.
So if you remember, if you recall the Parseval's energy theorem, then if x of n is a function having Fourier transform, discrete time Fourier transform x of e to the power j omega, then energy of x of n, that is summation n equals to minus infinity to plus infinity magnitude of x of n whole square, it may be obtained using the property that is 1 upon 2 pi times integrated over any 2 pi duration, because we know that the Fourier transform of any discrete time sequence is always periodic in frequency and it is periodic by 2 pi. So we have to integrate only over one period, that is from, for any 2 pi duration, that is from minus pi to pi or 0 to 2 pi, you can take any one. 1 upon 2 pi times minus pi to pi magnitude of x of e to the power j omega whole square d omega. Particularly if you see, this part of the expression is giving energy in one period of x of e to the power j omega. Okay, so if we find the Fourier transform of Sinc function that is given in the problem, then using this property, you can find the energy of x of n. Now, another very important result, if a function is sine xn upon pi n, in case of continuous, if you are having a function sine xt upon pi t, in continuous time domain, if there will be a function sine xt upon pi t, then its Fourier transform is a rectangular function from minus x to x. If a function is sine xt upon pi t, then transform exists only from minus x to x with a value amplitude equals to 1. That is the Fourier transform x of omega with respect to omega, if it is your x of t. And we know that the Fourier transform in continuous and discrete domains are always same. Only the thing is, for continuous time signal, there is only one repetition. If we sample this signal, then we'll be getting a discrete time counterpart of this signal, and the Fourier transform will be same, but now that transform will be repeating from minus infinity to plus infinity after every 2 pi duration of frequency. So if we take a function in discrete time, xn equals to sine xn upon pi n, then its discrete time Fourier transform will be exactly the same, that is existing from minus x to x only. With having value 1, it is transform x of e to the power j omega with respect to omega. But now it will be repeating itself after every 2 pi interval of frequency. So this one repetition must be existing in the interval during minus pi to pi. Again, the same repetition will be, and it will be from minus infinity to plus infinity. So what you have to do is to find energy of this signal. If you have to find energy of this function sine xn upon pi n, you just have to find out the energy of this rectangle. And we have already seen that the energy of a rectangle is a square into tau. Tau is total width. So what signal we are having here in time domain? X of n is sine omega cn upon omega cn. So to convert it in the form of sine xn upon pi n, pi is missing in the denominator. What we can take here is, if we take sine omega cn upon pi n, pi was missing, we have multiplied pi in the denominator, so we have to multiply pi in the numerator as well. And we have separated omega c from this denominator, so omega c is written as this. So you can say that this function x of n is sine omega cn upon omega cn. It may be written as pi upon omega c times sine omega cn upon pi n. Now if you see, this is the function of the type sine xn upon pi n. At the place of x, what is here? Omega c. So now we are having xn, that is pi upon omega c into sine of omega cn upon pi n. So the Fourier transform will look like what? It will be looking like
sin xn upon pi n. At the place of x, we are having omega c. So the transform will be from minus omega c to plus omega c. And now the value will not be 1 as the coefficient is pi upon omega c. So the value will be 1 into omega pi upon omega c. It will be having the value pi upon omega c. It is the Fourier transform x of e to the power j omega. And it will be during minus pi to pi. And same thing will be repeating from minus infinity to plus infinity. There will be infinite such repetition from minus infinity to plus infinity after every 2 pi interval of time of frequency. So now we have obtained the Fourier transform, and what we have written here is energy of x of n function. It may be obtained using 1 upon 2 pi times integration minus infinity minus pi to pi x of e to the power j omega magnitude whole square d omega. And you have already mentioned that this part is nothing but energy in one period. Energy in one period of what? X of e to the power j omega. So in one period, if you see, the transform is a rectangle. And for this rectangle, energy is what? Energy is a square tau. And a is what? Here a is equals to pi upon omega c. And tau, that is total width of this rectangle, is twice of omega c. From minus omega c to plus omega c, the energy is total width is twice of omega c. So if you substitute these values, so energy of x of n is going to be 1 upon 2 pi times a square, that is pi upon omega c whole square into tau. A square into tau, and tau value is twice of omega c. So what you are getting finally is 1 upon 2 pi square upon omega c square into twice of omega c. This 2 and 2 will get cancelled. This 2 get cancelled. Omega c and this 1 power of omega c got cancelled. This 1 power of pi will be cancelled with this pi. So the final expression that you are obtaining is pi upon omega c. So the final energy for this function, that is given as sinc of omega c n upon omega c n, that is equals to pi upon omega c, and accordingly you can select the correct option. That is option B is correct for this question, pi upon omega c. क्या ये सभी को क्लियर? क्या ये एक्सप्रेशन सभी को क्लियर है? सर डायरेक्ट टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं ना? देखिए यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम सिंक फंक्शन है. कंटिन्यूस टाइम सिंक फंक्शन होता तो हम एनर्जी 1 ले लेते, ठीक है. यहाँ डिस्क्रीट टाइम की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने उसको परफॉर्म नहीं किया, प्रेफर नहीं किया. हमने इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाकर सॉल्व किया. क्या ये सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो बताएंगे. नेक्स्ट देखिए, Fourier series of any periodic signal x of t can be obtained if. देखिए यहाँ पर आपसे डिरिचलेट्स कंडीशंस पूछी गई हैं. आप ये जानते हैं कि फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ Fourier series there are some sufficient conditions. These are not necessary but sufficient conditions. If these conditions are satisfied, then definitely the Fourier series can be obtained for a given x of t. These conditions are known as Dirichlet's conditions. You must be knowing these are what? Sufficient but not necessary. So what are these conditions? There are 4 Dirichlet's conditions. The first condition says that the function x of t must be absolutely integrable over one period of time, and that is given in the first statement as well. For one period of time, signal must be absolutely integrable. It is represented as 0 to t magnitude of x of t. That means absolute integrability we are talking about. It must be less than infinity. That is, this is correct. It is the first Dirichlet condition that the function must be absolutely integrable over one period of time. The next Dirichlet condition is there must be finite number of discontinuities within one time period.
तो यहाँ पर भी आप अगर देखें तो यही मेंशन किया गया, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज विद इन फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम t. It is again correct Dirichlet condition. The third condition says that function must have finite number of maxima and minima, and the fourth Dirichlet condition is function must be a single valued function of time. It means at any particular instant of time function must be having only one value. So these four are Dirichlet conditions. Out of these four, two conditions are mentioned only. The third is infinite number of discontinuities. So correct Dirichlet condition is finite number of discontinuities. So it is wrong. Fourth is okay, only three are given. Otherwise, there are four Dirichlet conditions. I have already mentioned all the four conditions. Third and fourth is finite number of maxima and minima. Third condition is, two conditions are written here. Third condition is finite number of maxima and minima over one period, and fourth condition is function must be single valued. या आप लिख सकते हैं यहाँ पर x of t must be single valued function of time. So these four are Dirichlet condition 1, 2, 3 and 4. Out of these four conditions, two are mentioned. This is wrong. So the correct option is 1 and 2 only, and accordingly option C is correct. Okay, now next question. The discrete Fourier series representation of the following sequence x of n is cos pi by 4n. See here, if you recall the basic analysis and synthesis equations of discrete time Fourier series, as you write in continuous time Fourier series, similar expressions are for discrete time as well. X of n, it may be represented as summation from for k equals to any n interval, means n is the time period of discrete time periodic signal. So you have to take any n interval of frequency, and it is x of n may be represented as ck, that is Fourier series coefficients, into e to the power j k omega naught n, where omega naught equals to 2 pi upon n, and it is known as synthesis equation. And the analysis equation you write is ck equals to summation, it is 1 upon n into summation for n for any n interval. You can take minus n by 2. मतलब आप कोई भी एक n इंटरवल ले सकते हैं. जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 5 है, तो आप -1 से 3 तक ले सकते हैं. टोटल 5 सैंपल्स आपको लेने हैं. तो -3 से अगर आप -1 से काउंट करेंगे तो -1 एक सैंपल, n इक्वल्स टू 0 पर एक सैंपल, फिर 1 पर एक सैंपल, 2 पर एक सैंपल और 3 पर एक सैंपल. टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स 5 हो गए. तो किसी भी एक n नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए आपको ये समेशन लेने होते हैं. ठीक है. और सिंथेसिस इक्वेशन में आप लिखते हैं यहाँ पर, जिसके लिए आपको निकालना है इंटू ई टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट एन. यहाँ पर भी सेम है, आपका ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आपको पुट करनी है, 2 पाई अपॉन एन. तो इसलिए जब आप 2 पाई अपॉन एन पुट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन कैसा दिखता है, ये एक्सप्रेशन ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन का जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं आप, ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट एन, ये एक्सप्रेशन फिर आपको ऐसा दिखता है, ई टू द पावर जे 2 पाई के एन अपॉन एन. ये इस टाइप से आपको लिखा हुआ दिखता है. यही एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है, अगर आपने उसको, जैसे यहाँ पर तो आपको कोसाइन फंक्शन दिख रहा है, इसको आप इन्वर्स से ब्रेक कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल्स में. एक्सपोनेंशियल में ब्रेक कर लीजिए और इस वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर कर लीजिए तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा. ठीक है. थोड़ा सा देखते हैं इस क्वेश्चन को. यहाँ पर क्या गिवन है, कॉस ऑफ पाई बाई 4n गिवन है. ठीक है. जो हमारे पास एक्स ऑफ एन गिवन है, दैट इज कॉस पाई बाई 4n. मतलब कॉस ओमेगा नॉट एन से अगर आपने कंपेयर किया तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4. तो एन टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इक्वल्स टू, आप ये जानते हैं डिस्क्रीट के केस में सिर्फ 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट नहीं लेते, क्योंकि हो सकता है कि 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट इंटीजर नहीं हो. तो कंटिन्यूस के लिए तो नॉन इंटीजर भी आपका टाइम पीरियड वैलिड होता है, बट फॉर डिस्क्रीट द टाइम पीरियड मस्ट बी एन इंटीजर. सो टू मेक दिस एन एज इंटीजर, you have to multiply it by a smallest integer m, which makes this overall n as an integer. In some cases
the least value of integer may be 1. In other cases, you may have to take m other than 1. In this case, if you put omega equals to pi by 4, so here what we are getting is 2 pi upon pi by 4, which is already an integer, because this pi and pi is getting cancelled, and 2 into 4 is equals to 8, which is already an integer. Therefore we can take m equals to 1. Here it is 8 upon 8 into m, therefore n equals to, we are getting n equals to 8. For this we have taken m equals to smallest integer, that is equals to 1. So now you have to xn equals to cos pi n, cos pi by 4n. If you break this by Euler's, then x of n we can write as x of n cos omega naught n may be represented as 1 by 2 e to the power j omega naught n, 1 by 2 e to the power j omega naught n, and at the place of omega naught we are having pi by 4, and plus 1 by 2 e to the power minus of j omega naught n, that is pi by 4. So it is the basic expression. You can expand anytime. Cos x equals to 1 by 2 e to the power jx plus 1 by 2 e to the power minus jx, what we have done here. Okay, so now if you compare this with this synthesis equation, what we have written as the synthesis equation is, here x of n is, if you put n equals to 8, so x of n may be written as x of n. For n equals to 8, you can write what? K equals to, let's say we take from -3 to +4. How many samples are in between -3 and +4? Total 8 number of samples. So if we are having n equals to 8, so we can expand this x of n in terms of -3 to 4 summation for any n number of samples. Then ck e to the power jk omega naught n, where omega naught is known to be pi by 4. In this case, for the given problem, omega naught is what? Pi by 4. So if you expand this, if you take this expression forward, what we have written is x of n equals to summation from, we have taken k equals to -3 to 4, ck e to the power jk omega naught n, and omega naught equals to what? Pi by 4. ck e to the power jk omega naught n. If you expand this expression, let's say it is equation 1, and if you expand this, then what you are going to obtain is c minus 3 e to the power minus j 3 into pi by 4n. We are placing at the place of k, at both the places we have taken k equals to -3. ठीक है. Similarly आप यहाँ से बढ़ते चले जाएंगे, c minus 2 e to the power minus j 2 into pi by 4n, c minus 1 e to the power minus j 1 into pi by 4n, c 0 into e to the power j 0. जैसे ही आपने k की जगह पर 0 पुट किया, तो ये पूरा ही एक्सप्रेशन 0 बन गया. ठीक है. प्लस c1 e to the power 1 into j pi by 4n, plus c2 e to the power 2 into j pi by 4, j into 2 into pi by 4, and so on up to what? Up to we have to take go till 4, c3 e to the power j 3 into pi by 4, and plus c4 e to the power j 4 into pi by 4. Okay, so we have expanded this expression from -3 to +4. Now let's say it is equation 2. If both are expressing the same x of n, then these two expressions must be same. If you see, if you observe these two, then what you are getting is, we are having 1 by 2 e to the power j pi by 4n. We are having only two exponentials, e to the power plus j pi by 4n and e to the power minus j pi by 4n. The first is here e to the power minus j pi by 4n, and the next is minus j pi by 4n and plus j pi by 4n. Next expression is here. So if you compare these two equations, then all of the other coefficients, it means if you are having only two coefficients,
It means all of the other coefficients c minus 3 or c minus 2 or c0 or c2 or c3 or c4 are 0. We can write here comparing equation 1 and 2. Comparing 1 and 2, c minus 3, c minus 2, c0, c2, c3 and c4. All these coefficients must be 0. Therefore, in this expression, these exponentials are absent. Only two exponentials are present. It means only these two coefficients are non-zero, c minus 1 and c1. If you compare e to the power minus j pi by 4, and here coefficient must be c minus 1, and here the coefficient of this exponential is 1 by 2. So comparing these two equations, what you can write is c minus 1 is equals to 1 by 2 and c plus 1 equals to 1 by 2. See here, this expression c1, it is equals to 1 by 2 e to the power j pi by 4n. So c1 equals to 1 by 2 and c minus 1 equals to 1 by 2. All other coefficients are what? 0. It means you are having only two coefficients non-zero for this for the expression of exponential Fourier series coefficient of cos of pi by 4n. Now, if you see the options, then in options, e to the power j omega naught, here capital omega is used for discrete. J omega naught n minus j omega naught n is correct, but value of omega naught is pi by 8, but we are having omega naught equals to pi by 4. It means this expression must not be correct option. Fourier series expression of this function, whatever will be the expression, but frequency must be pi by 4. So it is not correct. Pi by 4, here frequency is pi by 4. Here pi by 6, it must not be correct. So we are left with two options. These two options may be correct. But here if you see, it is j omega naught n negative and minus j2 omega naught. It means it is c minus 2 if it is written as j k omega naught n. Always compare it by e to the power j k omega naught n. So the value of k is minus 2. It means Fourier series coefficient represented in this expression is, it is c minus 2. In this expression, e to the power j k omega naught n, so k value is minus 1. It means in this expression it is k minus 1. तो c minus 1 1 by 2 ये सही है. हमने भी क्या फाइंड किया? हमने फाइंड किया है कि दो ही एक्सप्रेशंस, यहाँ पर दो ही कोफिशिएंट्स आने चाहिए 1 by 2. कौन कौन से? c minus 1 और c plus 1. c minus 1 तो ठीक है, ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है c minus 1 गिवन है कितना? 1 by 2. ये सही है. लेकिन ये जो c minus 2 है, आपने देखा कि c minus 2 कितना होना चाहिए? हमने क्या फाइंड किया? c minus 2 की वैल्यू होनी चाहिए 0. मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही नहीं. ये तो सही है, c minus 1 हमारा 1 by 2 है, लेकिन c minus 2 यहाँ पर 1 by 2 दिख रहा है, जो कि गलत है. तो भले ही यहाँ पर ऑप्शन ये आपको दिख रहा था पाई बाई 4 ओमेगा नॉट की वैल्यू सही गिवन है, लेकिन ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया. इसका मतलब ऑप्शन तो एक ही बचा, ऑप्शन तो एक ही बचा, यही सही होगा. लेकिन ये कैसे सही होगा? अगर आप यहाँ से कंपेयर करें तो e टू द पावर जे के ओमेगा नॉट एन, इसका मतलब ये क्या कोफिशिएंट बता रहा है? ये बता रहा है k की वैल्यू कितनी है? 7. इसका मतलब c7 की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए. और यहाँ से क्या बता रहे हैं? e टू द पावर जे के ओमेगा नॉट एन. यहाँ पर अगर आपने k की वैल्यू देखी तो k की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये c1 है. तो c1 तो हम फाइंड कर ही चुके हैं 1/2, ये तो करेक्ट है ही. c1 तो करेक्ट है ही हमारा. अब क्या c7 भी 1/2 होगा? तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स. डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स are periodic with n. Means whatever is the time period of discrete time sequence, by same amount the discrete time Fourier series coefficients are always periodic. It means if you find c of k plus or minus n, then you are going to get the same value, that is c of k only. Or even if you take c of k plus minus any integer multiple of n, again you are going to get the same value. So if c1 is 1/2 and c minus 1 is 1/2 and
n equals to 8. It means if we take C1 plus minus 8 or we take C1 plus minus 2 into 8 or C1 plus minus 3 into 8, all values will be equals to 1 by 2. Similarly, if C minus 1 is equals to 1 by 2, then if we take C minus 1 plus minus 8 or C minus 1 plus minus 2 into 8 or so on, all these value will be what? 1 by 2. So if you see, means C 1 plus 8 will give you 9, C9, 1 minus 8 will give you C7 minus 7, 1 plus 16 will give you C17, 1 minus 16 will give you C minus 15, 24 plus 1 C25 or C minus 23. All these value are what? All these values will be 1 by 2. Similarly, you can find from here C minus 1 plus 8 will be 7. So C7 equals to what? 1 by 2. From this you can see if C minus 1 is 1 by 2, then C7 will also be 1 by 2. So in this expression, in this option D, it is given that C7 should be 1 by 2, which is absolutely correct, and therefore this option is satisfying each and everything. That is, omega naught must be pi by 4, which is correct for the given question, as well as the Fourier series coefficients C1 and C7 will be 1 by 2. So all the things are correct for option D, therefore this option D is correct for the given question. Is it correct? क्या समझ पा रहे हैं सभी लोग? चलिए, तो बहुत अच्छे, आपने सी ऑप्शन किया था 25 का, ये 26 का ऑप्शन क्या आ गया हमारा? डी आ गया। चलिए थोड़ा जल्दी करेंगे अब क्वेश्चंस को, हम कुछ क्वेश्चंस को और कर लेते हैं। जैसे पूछा गया आपसे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर रिप्रेजेंटेशन फॉर xt cos ओमेगा नॉट टी। अभी अभी मैंने एक्सप्रेशन लिखा। जैसे आप xt अगर कंटिन्यूस टाइम के लिए लिखते हैं तो कंटिन्यूस टाइम के लिए क्या एक्सप्रेशन है हमारा? xt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, सॉरी इट इज समेशन फ्रॉम, क्या लिखते हैं? k इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। हमेशा जो सिंथेसिस इक्वेशन होती है उसमें पावर पॉजिटिव होती है, जो एनालिसिस इक्वेशन होती है उसमें पावर नेगेटिव होती है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो xt इक्वल्स टू, अगर आपने लिखा तो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट को जैसे यहाँ पर अगर सी के से रिप्रेजेंट किया गया तो आप लिख सकते थे सी के ई टू द पावर प्लस जे के ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन होना चाहिए कि अगर सिंथेसिस इक्वेशन लिख रहे हैं और अगर एनालिसिस इक्वेशन लिखते तो क्या होता? जैसे अगर यहाँ पर आपको सी के फाइंड करना होता तो एनालिसिस इक्वेशन क्या लिखते हैं आप? 1/t किसी भी एक टाइम पीरियड इंटरवल के लिए 0 से t तक के लिए जिस पीरियोडिक सिग्नल का फाइंड करना है टू द पावर, यही एक्सप्रेशन होता, लेकिन यहाँ पर साइन नेगेटिव होता, माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी होता। ठीक है, तो आपसे एनालिसिस नहीं सिंथेसिस इक्वेशन पूछी गई है, तो ये बस चेक कर लीजिए सी के, ये माइनस साइन नहीं होता। सिंथेसिस इक्वेशन में साइन क्या होता है? प्लस। तो ये माइनस वाले हट गए, प्लस में जे टू है, टू नहीं लिखना है आपको, तो जे के ओमेगा नॉट टी प्लस साइन के साथ, मतलब ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। सिंपली आपका क्या था? ये आपके डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आर बेस्ड ऑन यूजिंग, ये अगर आप कोई भी मेरा देखेंगे रिजल्ट, जो फूरियर सीरीज जब हम स्टार्ट करते हैं तो मैं यही आपको बार बार बताता हूँ कि ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा इसका क्या मतलब? अगर आप इस एक्सप्रेशन को आप ओपन करेंगे तो क्या चीज़ मिलेगी आपको? अगर आप इस एक्सप्रेशन को आप ओपन करते हैं तो क्या मिलता है आपको? xt इक्वल्स टू, मान लीजिए हम k की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से पुट करते हुए आए, हमने k की वैल्यू को -2 पुट किया तो c -2 e टू द पावर -j2 ओमेगा नॉट टी, c -1 e टू द पावर -j1 ओमेगा नॉट टी, c0 e टू द पावर j0 ओमेगा नॉट टी, c1 e टू द पावर j1 ओमेगा नॉट टी, c2 e टू द पावर j2 ओमेगा नॉट टी एंड सो ऑन। तो हमेशा ही फूरियर का आपको बस स्टेटमेंट याद रखना है कि वी कैन रिप्रेजेंट एनी पीरियोडिक सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। हम किसी पीरियोडिक सिग्नल को किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो लिखा आपने बीच बीच में C1 अल्फा 1, ये आप लिख रहे हैं,
ए अल्फा इंटू बी बीटा, इस टाइप से चीज, मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं आप। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है ये? इन एक्सपोनेंशियल्स का। जो कैसे एक्सपोनेंशियल्स है? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स है। और ये सभी एक्सपोनेंशियल्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं? हार्मोनिकली रिलेटेड। मतलब अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी देखें तो ओमेगा नॉट है, इसकी 2 ओमेगा नॉट है, इसकी 3 ओमेगा नॉट है की। तो ये जितने भी एक्सपोनेंशियल्स का आप लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, अगर ये हार्मोनिकली रिलेटेड होते हैं, इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल फंक्शन को, ऑर्थोगोनल बिहेवियर को फॉलो करते हैं। All these complex exponentials are orthogonal to each other. And the statement of Fourier is we can represent any periodic signal in the form of linear combination of orthogonal functions, a complete set of orthogonal functions. We can represent any periodic signal by using a complete set of orthogonal functions. So the complete set of orthogonal functions may be exponential signals, may be made up of sinusoids, cosinusoids and DC, that is constant functions. तो इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि हम फुरियर सीरीज में एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में लिखते हैं? हम अपने एक्स ऑफ टी को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं? ऑर्थोगोनल फंक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो कांस्टेंट कोफिशिएंट, कोसाइन फंक्शंस ओनली, साइन फंक्शंस ओनली, ऐसा नहीं है। आपने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फुरियर सीरीज में कोसाइन और साइन दोनों भी होते हैं अगर हमारा फंक्शन नाइदर ऑड नाइदर इवन हो तो। ठीक है, तो हम किसके टर्म्स में करते हैं? किस पर बेस्ड है हमारा रिप्रेजेंटेशन? ऑर्थोगोनल फंक्शंस पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सिग्नल x of t बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स? x of t इज पीरियोडिक विद पीरियड tj और t नॉट इक्वल्स टू 4 एंड एज फुरियर सीरीज कोफिशिएंट ck। ठीक है, आपके पास एक xt होना चाहिए जिसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 4। टाइम पीरियड 4 होना चाहिए और कोफिशिएंट ck होना चाहिए। x of t रियल वैल्यूड है। अच्छा, अगर x of t रियल वैल्यूड है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन होगा, अगर टाइम डोमेन में फंक्शन रियल वैल्यूड है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारा कैसा होगा? कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ck इज 0 फॉर मॉड ऑफ k ग्रेटर देन 1। इसका मतलब सिर्फ c1 और c-1 और c0 तीन ही पॉसिबल कोफिशिएंट्स हैं। c1 c0 आप ऐसे लिख लें, c-1 c0 और c1, ये तीन ही पॉसिबल कोफिशिएंट्स हैं, पॉसिबली नॉन जीरो। यहाँ पर तीन ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है। कौन कौन से? क्योंकि मॉड ऑफ के की वैल्यू जब 1 से बड़ी ले लेंगे, मतलब चाहे आप c2 ले लें या c-2 ले लें, वो सभी जीरो है। नॉन जीरो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है? सिर्फ जब मॉड ऑफ के हमारा लेस देन 1 है। ठीक है, या इक्वल्स टू 1। और द सिग्नल yt whose फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स आर डी। ऐसे यहाँ पर जैसे बताया गया कि xt के फुरियर सीरीज कोफिशिएंट ck है और yt के फुरियर सीरीज कोफिशिएंट dk है। आपको ये पता होगा कि अगर x ऑफ t के फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हो ck, तो यूजिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी x ऑफ t माइनस t नॉट के फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स क्या हो जाते हैं? e टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट इंटू सी के। अगर एक्स टी के सी के हम यहाँ पर अगर कोई टाइम में शिफ्टिंग करेंगे तो अब जो नया सिग्नल बनेगा उसके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? इसी एक्सपोनेंशियल से, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वही बताया गया आपको कि एक सिग्नल है yt जिसके फुरियर सीरीज कोफिशिएंट है डी के, जो कि ck के साथ कैसे रिलेटेड है? e टू द पावर j पाई k बाई 2। अच्छा, यहाँ पर आप अगर देखें, अगर t नॉट की वैल्यू 4 है, इफ t नॉट इज 4 देन ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 पाई अपॉन t नॉट, दैट इज 2 पाई अपॉन 4, दैट इज पाई बाई 2। So you can write that dk is equals to e to the power minus j k into pi by 2 is omega naught into ck, e to the power j k omega naught into t naught. T naught is equals to what? 1 in this case. It means if Fourier series coefficients for yt is dk that is related with ck with this given expression, it means you can write therefore yt is x of t minus 1. It means what? Yt is x of t minus 1 and it is odd. It means if we shift x of t by 1 unit, then the resultant signal will be what? Odd, because the Fourier series coefficients can odd only if the signal itself is odd. If the signal x of t is or y of t is not odd, then definitely the Fourier series coefficient will also not be odd. Okay, I think there is something missing in this question.
ठीक है, क्योंकि yt बताया गया, उसके बाद yt के बारे में कुछ चीजें नहीं बोली गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट इज 1/4 minus 2 to 2 x of t mod whole square dt is equals to 1/2. It is nothing but the expression for power of x of t. Power of x of t will be what? 1 upon t naught integration for any t naught duration, magnitude of x of t whole square dt. The same expression is given here. 1 upon t naught is 4. 1 upon 4, it can be written as 1 upon 4 integration from minus 2 to 2, that is for a total interval of 4 seconds, magnitude of x of t whole square dt. So it is given nothing but the power of x of t. So what information we are having about x of t signal? We have to find on based on these 4 conditions, then what should be the signal x of t? A signal that has time period equals to 4, first thing. Secondly, signal which has Fourier series coefficient, all coefficient 0 other than c minus 1, c0 and c1. Maybe c0 is also be 0, but it is definitely true that all the coefficient other than these 3 will definitely be 0. Okay. Third thing is, if we shift x of t by 1 unit, then the signal yt which will be obtained is odd function. And last is, the power of x of t is equals to what? It is equals to 1/2. So यहाँ पर देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें क्वेश्चन में कुछ चीज़ शायद मिसिंग है, क्योंकि वैसे हम इसको फाइंड तो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो देखिए, जितने भी ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं 2 to the power m, 2 to the power m, इन सिग्नल्स का पावर कभी 1/2 नहीं हो सकता। कोसाइन फंक्शन के लिए अगर हमारे पास कोई a cos ओमेगा नॉट t फंक्शन है, ओमेगा नॉट की वैल्यू कुछ भी हो, इसके पावर की वैल्यू क्या होती है? पावर इज a²/2। तो अगर हम 2 to the power m लेंगे तो इसका पावर जो आएगा वो 2 का स्क्वायर/2 से ये वैल्यू 1/2 नहीं आ सकती। इसका मतलब डेफिनेटली इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन हो सकता है -1 to the power m, क्योंकि अगर ये हमारा a है तो a²/2 करेंगे तो वैल्यू 1/2 आएगी। मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ओमेगा नॉट एंड 2 ओमेगा नॉट, तो ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ शायद मिसिंग है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आप अगर देखें तो मैंने आपको सॉल्व करवाया, एग्जैक्टली यही चीज़, सेम क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा, इसी टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन वहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमारे करेक्टली फॉर्म में गिवन थी। ठीक है, इस बार आप चेक कर लीजिएगा। इतना तो श्योर है कि यहाँ से जो ऑप्शन होगा इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर आप देखें तो ये अगर यहाँ पर ओमेगा नॉट नहीं लिखकर अगर कुछ और वैल्यू दे देते तो भी हम इसको चेक कर लेते कि इन दोनों में से किसके लिए टाइम पीरियड 4 आ रहा है। इन दोनों में से जिसके लिए टाइम पीरियड 4 आ रहा था वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए वो ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, बाकी और डिस्कस कर लेंगे क्योंकि टाइम है तो हम एक क्वेश्चन में वेस्ट नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स टी इज अ रियल सिग्नल। जैसे ही बता दिया गया कि रियल सिग्नल है विथ फुरियर ट्रांसफॉर्म एक्स है, लेट, अब यहाँ पर आपको बताया गया एक्स डैश ऑफ एफ डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एक्स ऑफ एफ, देन we are having two information and we must be knowing two property of Fourier transform. Properties from the properties of Fourier transform. First, that is in time domain and frequency domain. Time and frequency. In any of the domain, if the signal is real, if in one domain if the function is real, then definitely in other domain the function will be conjugate symmetric. Definitely in other domain the function will be conjugate symmetric. That means you say any function x of t to be real if it follows x conjugate of t is equals to x of t. If you take complex conjugate of any function and if you get the same function, then this function x of t is said to be a real function. So if the function xt is real, then definitely x conjugate of t equals to x of t. And if it is real in time domain, then it will be conjugate symmetric in frequency domain. It means x of omega or x of f will be x conjugate of minus f will be x of f. When you say a function to be a conjugate symmetric function, if you apply two operations, first one is conjugation and then reversal, after applying these two operations, if you again find the same x of f, then you say that x of f is a complex conjugate symmetric function. So if a function is
real in time domain, then definitely it will be conjugate symmetric in other domain. So here it is given that from properties of Fourier transform, what you know is if x of t is having a Fourier transform x of f, then Fourier transform for x conjugate of t. Fourier transform of x conjugate of t is x conjugate of minus f. It is the conjugation property of Fourier transform. All right. So if x conjugate of, now if x conjugate of t is x of t, if these two things are same, then these two should also be same. Therefore, if a function is real in time domain, then LHS is equal, then it must be conjugate symmetric in frequency domain, because RHS must also be the equal functions. So if you see, if you find in your options, you have to select whatever option is mentioning this x conjugate of minus f should be x of f. If you see, there is never in all these options, this one is not given. So if you replacing f by minus f both sides, if you replace f by minus f both the sides, then what you are going to obtain is x conjugate of minus f will give you f is equals to x of minus f. So you have to select this, that if the function is real in time domain, then definitely its Fourier transform will be conjugate symmetric, and if its Fourier transform is conjugate symmetric, then x conjugate of minus f must be x of f. If this is missing in option, then what we have done is we have replaced f by minus f on both the sides, then we have obtained x conjugate of f equals to x of minus f. That is, if we have to find the conjugate of transform of a real function, then we can simply find it by replacing f by minus f in its transform. So x conjugate of f equals to x of minus f means option A is correct for the given question. So in question number 30, option A is correct. Next one, let the transfer function of a network h of f be h of f magnitude into the power j theta f e to the power, okay. If a signal x of t is applied to such a network, output yt is given by, okay. See here, let's say we are applying an input x of t which has Fourier transform x of omega or x of f, x of omega or x of f. Transfer function of this system is h of f or h of omega. You can write h of omega or h of f, and the output is yt, transform is y of omega or y of f. Okay. So whenever a function is complex, whenever any quantity is complex, then how you can represent it? For any complex quantity, let's say h of omega is a complex quantity, so h of omega may be written as magnitude of h of omega into e to the power j times phase angle of h of omega. Or h of f, we can write it is equals to magnitude of h of f into e to the power j times phase angle of h of f. This is only what we are having here, magnitude of h of f e to the power j times phase angle of f. This is phase angle of h of f, which is written as the form of theta f, and this theta f to be j 4 pi f e to the power, here j term is missing, e to the power minus j 4 pi f. So it is given to be h of f, that is 2 e to the power j times minus 4 pi f. So if you compare, then you can understand that magnitude of h of omega or magnitude of h of f is what? 2, and phase angle of h of f is equals to what? This phase angle of h of f is equals to j, except j, the term minus 4 pi f is the overall phase angle. Okay. So again, अगर हमें टाइम डोमेन में आउटपुट फाइंड करना होता तो हम क्या करते हैं?
xt को ht के साथ कन्वॉल्व करते। अगर यही फ्रीक्वेंसी डोमेन में करना होता तो क्या करते, y ऑफ f लिखें या y ऑफ ओमेगा लिखें, दोनों ही इस एक्सप्रेशन को फॉलो करेंगे, x ऑफ f मल्टीप्लाइड विथ h ऑफ f। ठीक है, तो x ऑफ f को भी हम क्या लिख सकते हैं, x ऑफ f जो भी हमारे पास है, अब इसको अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं h ऑफ f के साथ, तो x ऑफ f को भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि x ऑफ f का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ इसका फेज एंगल होगा, फेज एंगल ऑफ x ऑफ f, और मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ f इसका भी कुछ फेज एंगल होगा। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल क्या होता है, आपका जो मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड है ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ f और मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ f मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, और जो फेज एंगल है दोनों के एक्सपोनेंशियल में, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो टोटल फेज एंगल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये समझ रहे हैं, तो यहाँ से जो फेज एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा, x ऑफ जो ओवरऑल फेज एंगल होगा वो e⁻j टाइम्स फेज एंगल ऑफ x ऑफ f प्लस फेज एंगल ऑफ h ऑफ f। तो ये हमारे आउटपुट होता है जो हम एक LTI सिस्टम से पास करते हैं किसी इनपुट को। तो अगर हमारा इनपुट कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड और कुछ फेज एंगल है, तो उस इनपुट का मैग्नीट्यूड ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होता है, और उस इनपुट का फेज एंगल ट्रांसफर फंक्शन के फेज एंगल में ऐड होकर आपको आउटपुट का टोटल फेज एंगल देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया। अगर हमसे बोला गया कि xt को अगर हम ऐसे किसी सिस्टम से पास करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और फेज एंगल हमारे पास मेंशन्ड है, तो आउटपुट yt क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब आप इसमें अगर थोड़ी सी प्रॉपर्टी को समझें, जैसे आपको क्या पता है कि अगर x ऑफ t के लिए हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं x ऑफ ओमेगा, तो अगर हम इसको t0 से अगर हम क्या कर दें, अगर हम टाइम में शिफ्ट कर दें, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जो भी पहले ट्रांसफॉर्म था वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x ऑफ ओमेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, e⁻j ओमेगा t0 के साथ इंटू x ऑफ ओमेगा। यही चीज़ अगर हम f डोमेन में लिखते कि अगर xt के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म है x ऑफ f, तो x ऑफ t माइनस t0 के लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस यहाँ पर ओमेगा की जगह अगर आप 2πf पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा e⁻j 2πf इंटू t0 इंटू x ऑफ, जो xt का हमारे पास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो देखिए अभी अभी हमने क्या लिखा कि y ऑफ f की वैल्यू क्या होती है, x ऑफ f मल्टीप्लाइड विथ h ऑफ f होती है। ठीक है, मतलब x ऑफ f मल्टीप्लाइड विथ, अगर आप फेज एंगल और मैग्नीट्यूड के टर्म से बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो गिवन है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाता है, फेज एंगल ऐड हो जाएगा। ये तो अगर आपको x ऑफ f भी गिवन होता है मैग्नीट्यूड और फेज के टर्म्स में, तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज करते। अगर आपको x ऑफ t के लिए, x ऑफ f के लिए मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के टर्म्स में नहीं गिवन, तो डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं x ऑफ f इंटू h ऑफ f। h ऑफ f इज गिवन टू बी वॉट, 2 टाइम्स e⁻j 4π f, ऐसा गिवन है, 2 टाइम्स e⁻j 4π f। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखेंगे, इसको कंपेयर कीजिए, इसको और क्या लिख सकते हैं, दैट इज y ऑफ f may be written as 2 टाइम्स e⁻j 2 इंटू और 2π इंटू f इंटू 2 इंटू x ऑफ f। Can we write this factor as this? This 2 we have taken outside. e⁻j 4π f we have written it as e⁻j 2π f into 2, then into x of f. Because what we have to do is we have to take inverse Fourier transform of y of f to find y of t. So if we take inverse Fourier transform, hence y of t is written as, y of t may be written as what, 2 into, consider this term, consider this part. If x of t has a Fourier transform x of f, then x of t minus t0 will have the transform e⁻j 2π f into t0 into x of f. Here it is the same thing, x of f e⁻j
2 pi into f into t naught. So if here it is minus, then this minus, and t naught is what? This value 2 is representing t naught here. So by comparing these two, you can understand that inverse of this part, x of f into the power minus j 2 pi f into 2 is going to be what? X into t minus 2. If you time shift x of t by minus 2 units, then its Fourier transform will have transform x of f multiplied with this factor, what is given here. So if you pass x of t, a function x of t, by a network which has transfer function having magnitude 2 and phase angle 4 pi f minus 4 pi f, then this system, this network is going to provide a delay of 2 units in the input, and output will be yt is equals to 2 in times x of t minus 2. According to this, the option must be 2 times x of t minus 2, that is option C is correct. Okay, चलिए, तो ये मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा. बीच में मैंने आपको ओवरऑल बताने की कोशिश की है कि अगर x ऑफ t का भी फुरियर ट्रांसफॉर्म आपको मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के टर्म्स में गिवन होता, तो फिर हम दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करते, फेज एंगल को ऐड करते, लेकिन यहाँ ऐसा गिवन नहीं था, तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं x ऑफ t के टर्म्स में क्या वैल्यू होगी. समझ रहे हैं ये सभी लोग? चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल t टू द पावर माइनस एटी यू टी. तो बिल्कुल ही सिंपल है, आपको पता है कि अगर f ऑफ t हमारे पास कोई फंक्शन, देखिए अब ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन ही है ज़्यादातर, तो आपको जल्दी बन जाएंगे. यह हमें पता है कि अगर किसी फंक्शन xt का फुरियर ट्रांसफॉर्म हो x ऑफ ओमेगा, तो हम अगर इसको t से मल्टीप्लाई करते तो t इंटू एक्स टी का फुरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? j टाइम्स d बाई डी ओमेगा ऑफ x ऑफ ओमेगा. ठीक है, अब इसका तो आपको पता है, इतने पार्ट का तो आपको ट्रांसफॉर्म पता है कि अगर e टू द पावर माइनस एटी यू टी बस होता है तो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन ए प्लस जी ओमेगा होती है. तो अगर हम इस x ऑफ t में t मल्टीप्लाई कर दें तो t इंटू द पावर माइनस एटी यू टी का ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? और इतना ट्रांसफॉर्म तो आप याद भी रखते हैं, दैट इज अगर आप इसको j टाइम्स d बाई डी ओमेगा करेंगे, ओमेगा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 अपॉन ए प्लस जी ओमेगा को, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 1 अपॉन ए प्लस जी ओमेगा होल स्क्वायर. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आपका है दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. आप बस इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, इतना आप मुझे लगता है याद भी रखते हैं. आप चाहें तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जैसे अगर कोई हमारा फंक्शन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि एक्स ऑफ टी इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. मतलब आप ये समझ लीजिए कि बाउंडेड फंक्शन दिखे आपको और फाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करता हुआ बाउंडेड फंक्शन अगर दिख रहा है, या अगर आपको इनफाइनाइट ड्यूरेशन में भी एग्जिस्ट करता हुआ फंक्शन दिख रहा है, मतलब दो चीज़ आप समझ लीजिए कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल अगर है, तो अगर इनफाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करे तो फाइनली जीरो होना चाहिए उसकी वैल्यू, और अगर फाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट कर रहा बाउंडेड है तो ऐसे ही हमारा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. तो इस केस में जो हमारा फुरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ऑफ ओमेगा, वो हम एक्स ऑफ एस से ही फाइंड कर सकते हैं. लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस से फाइंड कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग एस इक्वल्स टू जे ओमेगा. ठीक है, तो अगर जैसे हम ये देखें कि ई टू द पावर माइनस ए टी अगर हमारे पास है, टी टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी, इस फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, इसका लैप्लास होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एस प्लस ए टू द पावर एन प्लस वन. ये हमारा क्या है? एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल. अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? टी टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस एटी, तो ई टू द पावर माइनस एटी यू टी के लिए मतलब ये भी आपका क्या है? डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे ई टू द पावर माइनस एटी यू टी का लैप्लास आपको पता है ये लैप्लास इसका पता है. अगर यहीं पर हम एन की जगह 1 पुट कर देते तो हमारे पास क्या आ जाता है? टी टू द पावर माइनस एटी यू टी आ जाता. अगर n की जगह आपने 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 1 अपॉन s प्लस ए. एस की जगह पर क्या पुट करना है? फुरियर ट्रांसफॉर्म के लिए जो ओमेगा. वैसे अगर आप देखें तो ये क्या होता? s प्लस ए का होल स्क्वायर. टी टू द पावर n है, n की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाती? वैल्यू 2 हो जाती. तो ये इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता. अब अगर ये सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो उसका फुरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं? देयरफॉर फुरियर ट्रांसफॉर्म कैसे मिल जाता? यही वैल्यू 1 अपॉन
एस प्लस ए के होल स्क्वायर में आप क्या पुट कर देते, एस इक्वल्स टू जी ओमेगा पुट कर देते, तो यही रिजल्ट क्या आ जाता, 1 ए प्लस जी ओमेगा का होल स्क्वायर आ जाता। तो ये कुछ लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप देखें टी टू द पावर एन का, सिंपली अगर टी टू द पावर एन यू टी का होता, तो ये आपका बाउंडेड नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ, ई टू द पावर माइनस ए टी कॉस ओमेगा नॉट टी यू टी एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ई टू द पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा नॉट टी यू टी, इसका हम ऑलरेडी लिख भी चुके हैं, ये वैल्यू ओमेगा नॉट अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो ये सभी जो सिग्नल्स हैं ये क्या है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल्स हैं। इनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको इजीली याद रखते हैं, आप इसी में एस की जगह जे ओमेगा पुट कर देंगे तो फूरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ यूनिट रेक्टेंगुलर पल्स शोन इन फिगर। फूरियर ट्रांसफॉर्म जो आपको याद रखना है, अगर हमारे पास ये कोई रेक्टेंगुलर फंक्शन, अभी हमने एक रेक्टेंगुलर फंक्शन लिखा भी था, स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फंक्शन माइनस टाउ बाई टू से टाउ बाई टू अगर एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू अगर ए है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ए रेक्टेंगल ऑफ टी अपॉन टाउ। तो इसके ट्रांसफॉर्म आपको याद रखना है, इसका ए रेक्टेंगल ऑफ टी अपॉन टाउ का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, या तो आप इसका ट्रांसफॉर्म लिखते हैं ए टाउ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाई टू, या फिर अगर हमने ये सैम्पलिंग के टर्म्स में लिखा और ओमेगा के टर्म्स में लिखा, यहीं पर अगर हम ओमेगा को नहीं लिखकर एफ के टर्म्स में लिखना चाहते तो यही वैल्यू क्या हो जाती, ए टाउ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा की जगह 2 पाई एफ पुट करेंगे। इफ वी रिप्लेस ओमेगा बाई 2 पाई एफ, देन वी कैन रिप्रेजेंट द सेम ट्रांसफॉर्म एज 2 and 2 will get cancelled, so it will be pi f tau. If we want to find the Fourier transform of rectangular function but in terms of sinc function, then you must be knowing that sinc of x is equals to sampling of pi x, and sampling of x is equals to sinc of x upon pi. It means you can convert any sinc and sampling function in terms of each other. So if we are having in terms of sampling function, so we can write the same transform of this function as a tau sinc of sampling of x is what, sinc of x upon pi. So if you divide this by pi, so it will be omega tau upon 2 pi. Again, if you want to write in terms of x but not in terms of omega, if you want to write in terms of f, then put omega equals to 2 pi f. So 2 pi and 2 pi will get cancelled, and it will be a tau sinc of f tau. So all these four are Fourier transform of rectangular function. If we put a and tau equals to 1, then unit rectangular function is obtained as unit rectangular function. That is simply rect of t. That is a equals to 1, tau equals to 1. If we take the total width of a rectangle equals to 1 and amplitude is equal to 1, then we get unit rectangular function, that is rectangle of t, and then the transform will be a tau, means a and tau is 1, so it is sampling of omega into 1 by 2, that is omega by 2, or sampling of pi into f into tau, that is pi into f, then sinc of tau is 1, so it is omega upon 2 pi, and here says next a tau, that is sinc of f. So most important is this, for unit rectangular function, rectangle of t transform is sinc of f, and in this case most important is this, a tau sampling of omega tau by 2. Now coming to the question, here we are having a rectangle for which total width tau is what, tau is equals to 2, from minus 1 to 1 tau is equals to 2, amplitude value is what, 1, and we have to find the options in terms of omega. So what we have written in the next slide is a rectangle of t upon tau is having a Fourier transform which is given as a tau sampling of omega tau by 2.
omega tau by 2. Therefore, if we place a equals to 1 and tau is equals to 2, then we got the transform as x of omega equals to a is 1, tau is 2, so it is 2 sampling of omega into tau, that is 2 divided by 2. Now this 2 and 2 will get cancelled and we'll be having 2 sampling of omega. And what sampling of x is? Sampling of x is sin x upon x. So it will be 2 into sin omega upon omega. Sampling of omega is what? Sin omega upon omega. So 2 sin omega upon omega, that is option B, is correct for this given question. Next, the Fourier transform of e to the power minus x square by 2. See, it is the Gaussian function. The standard Gaussian function is e to the power minus pi t square. For this function, the Fourier transform is e to the power minus pi f square. That's why you say that Fourier transform of Gaussian function is Gaussian itself. गॉसियन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म गॉसियन ही होता है, इसलिए आप कहते हैं e टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? पाई एफ स्क्वायर होता है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्टैंडर्ड गॉसियन फंक्शन ही है, तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर हमारे पास e टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर का ट्रांसफॉर्म पूछा जाए, तो यहाँ पर इस पर टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसमें ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे, वहाँ आपको डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म आता है, इट इज़ अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन ए टाइम्स e टू द पावर माइनस ऑफ पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ये f के टर्म्स में है, या फिर अगर आपको ओमेगा के टर्म्स में चाहिए तो यहीं पर क्या आ जाएगा? ओमेगा के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन ए इंटू ई टू द पावर एफ स्क्वायर इज व्हाट? एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर। यस, इज इट करेक्ट? सो पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए मीन्स पाई स्क्वायर into omega square upon 4 pi square upon a, that is into 1 upon a. So here if you see, this pi square and pi square will get cancelled and omega square upon 4 pi square। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू? ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 e टू द पावर माइनस साइन ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4a. So it is a transform of e to the power minus at square. So in e to the power minus x square by 2, the value of a is what? At square. At the place of t it is mentioned to be x. These are dummy variables, no need to replace anything else. So a value is 1 by 2. So the transform will be under root of pi upon a, that is pi upon a, that is 1 by 2, into e to the power minus of omega square upon 4a. A is what? 1 by 2. So it is 4 into 1 by 2. So the transform would be under root of 2 pi times e to the power minus of omega square by 2. So it is the final transform x of omega for this given question, that is under root of 2 pi e to the power minus omega square by 2. There is misprint in the given options, so the correct option would be x of omega. This is correct. If it is not mentioned here, it means there is either misprint or typing mistake. So the transform will be, correct transform will be under root of 2 pi e to the power minus of omega square by 2. Next question देखिए, the continuous time LTI system is described by this equation using Fourier transform for xt equals to the output yt will be. Again the same thing. Whenever there is a differential equation given to you, at first take the Fourier transform or Laplace transform, whichever you want, on both the sides, and then find the transfer function of the system. That is, if we use the Fourier transform, then we know that if x of t has Fourier transform x of omega, then the Fourier transform of differentiation d by dt of xt, the Fourier transform is what? J omega times x of omega. ठीक है, for convenience let j omega equals to s for convenient process. So if you take the Fourier transform in the given expression, so you can write
transform of this. If yt would be there, so transform will be y of omega. Or if d by dt of yt is given, so you can write s into, or either it is mentioned in Fourier transform, you can solve it in Laplace transform. So we are solving it in Laplace domain. So d by dt of yt will have a transform s y of s plus 2yt Laplace would be 2y of s equals to x of t Laplace would be x of s. If we take y of s common, then we are having s plus 2 equals to x of s. So at first we have to find transfer function h of s, that is y of s upon h of s, x of s. And in this case ys xs ratio is coming to be what? 1 upon s plus 2. So we have obtained the transfer function of the given system as 1 upon s plus 2. Now x of t is mentioned. X of t is given to be e to the power minus t ut. So the Laplace transform x of s would be 1 upon s plus 1. So now we are having transfer function h of s and input transform x of s. Therefore we can find output in Laplace domain y of s is equals to xs into hs, that is equals to 1 upon s plus 1 into s plus 2. Now what we are going to do is, we'll be first breaking it in partial fraction, then we'll be taking the inverse Laplace transform to find y of t. So if it is y of s, that is 1 upon s plus 1 s plus 2, we have obtained y of s is 1 upon s plus 1 s plus 2, which can be written after partial fraction as 1 upon s plus 1 minus 1 upon s plus 2. Therefore inverse Laplace transform will give you output in time domain yt. Inverse of this will be e to the power minus t ut, and minus inverse of this will be e to the power minus 2t ut. So we are already ready with the options. E to the power minus t minus e to the power minus 2t ut. So the option is C. Correct option is option C. तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व कर पा रहे होंगे. बहुत अच्छे साक्षी, वेरी गुड. हेलो इन्वेंटर, चलिए बहुत अच्छे. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, which one of the following is correct for Parseval's equality. देखिए Parseval's equality नहीं, यहाँ पर वही पार्सेवल्स थ्योरम पूछा गया जो हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. जो पार्सेवल्स रिलेशन है फूरियर ट्रांसफॉर्म के, कि अगर आप टाइम डोमेन में एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, और उसी को जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में फाइंड करते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पर देखें तो यही एक्सप्रेशन, ये ऑप्शन में ही आपको करेक्ट दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर डी ओमेगा. यही आपका पार्सेवल्स रिलेशन है करेक्ट. ठीक है, तो इसको मुझे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं. तो ये ऑप्शन आपका ए करेक्ट है फॉर क्वेश्चन नंबर 36. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर अपीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ टी एज शोन इन द फिगर. नॉट सॉल्यूशन, यहाँ पर इसकी जगह फूरियर ट्रांसफॉर्म. आपसे फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछा गया, तब यहाँ पर ओमेगा के टर्म्स में आपको ये चीज़ें दिख रही. ठीक है, तो देखिए ये आपका एक्स ऑफ टी फंक्शन गिवन. ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर आपको डायरेक्टली, अगर मान लीजिए इसी में लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जाता तो हम इसका इजीली लैप्लास निकाल सकते थे. क्यों? क्योंकि रैम फंक्शन के टर्म्स में इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रैम फंक्शन का लैप्लास निकाल सकते हैं. लेकिन अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछा जा रहा है तो हम रैम फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते, क्योंकि रैम का फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता. रैम अनबाउंडेड सिग्नल. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रॉपर्टीज के थ्रू जाना चाहिए. अगर आप इस क्वेश्चन को, इस शेप को पहले डिफरेंशिएट कर लें, अगर आप इसको पहले डिफरेंशिएट कर लें, तब जो शेप बनेगा, अगर आप उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लें और आप फिर ये प्रॉपर्टी यूज कर लें कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी. क्या प्रॉपर्टी है हमारी डिफरेंशिएशन की? कि अगर एक्स ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो एक्स ऑफ ओमेगा, तो अगर हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है? जे ओमेगा टाइम्स डी ऑफ ओमेगा, जे ओमेगा टाइम्स एक्स ऑफ ओमेगा. तो मान लीजिए आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया, तब जो सिग्नल मिला, अगर आप उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते, तो जो ट्रांसफॉर्म आपको मिलेगा वो एक्स ऑफ ओमेगा नहीं मिलेगा, वो क्या मिलेगा? जे ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ओमेगा मिलेगा.
अब उस ट्रांसफॉर्म को सिंपली जे ओमेगा से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्स ऑफ ओमेगा मिल जाएगा। तो इसलिए ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन, अगर आप, डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, स्लोप, ठीक है। तो अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, if you differentiate a particular function in the duration where it is following a straight line, then the value of differentiation is nothing but the slope of that straight line. So if it is following a straight line during minus t1 to 0, the slope of this straight line is what? Slope is del y upon del x. So in t1 duration of time, it is reducing by minus t1. So slope is what? Minus 1. In t1 duration, value is getting decreased by t1. It means the slope of this straight line is what? Minus 1. In this case, again from 0 to t1, if we see, in t1 time duration, the value is getting decreased by t1. It means slope of this straight line is again what? Minus 1. So whenever the function is following a straight line, then the differentiation of that function during this interval will be nothing but the slope of the straight line only. But at t is equals to 0, if we see, at t is equals to 0, the function is discontinuous. At t is equals to 0, the function is changing from minus t1 to plus t1 suddenly. So it means function is having a discontinuity at time t is equals to 0. Whenever the function is discontinuous, then at the place of discontinuity, the result of differentiation is an impulse. At the place, or we can write at the point of discontinuity, the result of differentiation, result of differentiation is what? Is an impulse, is an impulse of area final value minus initial value. It means if you see, the value is changing from minus t1 to plus t1, so it is initial value. This minus t1 is initial value before discontinuity, and after discontinuity the function is reaching to a value of plus t1, so it is final value after discontinuity. So if we differentiate this function x of t, I am just redrawing it, we are having this x of t given like this. Minus t1 plus t1 is x of t plus t1 with respect to t. What we have already seen, slope is minus 1, slope is minus 1. So if we differentiate this function, then we are going to get d by dt of x of t, d by dt of x of t. During minus t1 to 0, the result of differentiation will be equals to slope, that is equals to minus 1. So from minus t1 to 0, the value is minus 1. From minus t1 to 0. From 0 to t1, the value is again what? Slope is minus 1 again. Therefore, from 0 to plus t1, again the value will be what? 0 to t1 value is again minus 1. But at t is equals to 0, what is the value of differentiation? At t is equals to 0, discontinuity is from minus t1 to t1. So there will be an impulse at t is equals to 0, and at t is equals to 0, the impulse will have an area. There will be an impulse at t is equals to 0 having an area equals to what? Final value t1 minus initial value minus t1. t1 minus of minus t1 will give you 2t1. So there will be an impulse of area 2t1 existing at t is equals to 0. So this function at t is equals to 0. So you can write that d by dt of x of t. d by dt of x of t is what? It is sum of two functions. One is rectangular function and the other one is an impulse function. This impulse function 2t1 area existing at t is equals to 0, it can be written as 2t1 del of t.
Is it right? An impulse at t is equals to 0 expression will be del of t, and area is written as the coefficient. So 2t1 is the coefficient of that impulse del t. And the other function is, it is added with another function which is a rectangular function. For this rectangular function, amplitude A is what? -1. Amplitude A is -1. Total width tau is from -t1 to +t1, that is 2t1. And center is what? Center is, it is centered at 0. So general representation of rectangular function is a rectangle of t minus center upon tau. So if you represent this, then it will be -1, it is plus -1 rectangle of t minus center, no need to write center as center is 0. So rectangle of t upon tau, and total width is tau is 2t1. So d by dt of x of t is sum of two functions, one is impulse and other one is a rectangular function having amplitude -1 as total width 2t1. So now if you take Fourier transform on both the sides, then d by dt of xt will have a Fourier transform j omega times x of omega is equals to impulse del t has Fourier transform 1, so that Fourier transform of 2t1 del t will be 2t1 only, plus, और ये माइनस साइन यहाँ हम बाहर कर ले अगर, then we can write minus. For this rectangle, to write Fourier transform of a rectangular function, we need only a and tau. The values of a and tau, as we have already mentioned here, that there are 4 possible ways to write a wide Fourier transform of a rectangular function. So we'll be using this one only, a tau sampling of omega tau by 2. So in this case, if we put the values for this, for the Fourier transform of this rectangle, if we have taken the minus sign outside, so a is 1, so a into tau, that will be 2t1. This is a into tau, 1 into 2t1, a tau into sampling of omega into tau by 2. Omega into tau value is 2t1 divided by 2. So it is the transform, that is 2t1 minus 2t1 into sampling of omega tau by 2. A tau sampling of omega tau by 2. It is the value of j omega into x of omega, but we have to find the value of x of omega only. So x of omega is what? This j omega will come out into denominator, 1 upon j omega times, it will be 2t1 minus 2t1. Sampling of x is nothing but sine x upon x. So it is equals to sine omega t1 upon omega t1. We have expanded sampling of x as sine x upon x. 2 and 2 will get cancelled, and it will be sine omega t1 upon omega t. Now if you see here, 1 upon j may be written as minus j. So it is minus j upon omega into 2t1 minus this t1 and t1 will get cancelled. So it is 2 upon omega into sine of omega t1. So now if you multiply minus j in both, or you can write j times minus sign, if you merge, then it will be 2 upon omega square into sine of omega t1. We are writing this negative term first, minus into minus is now positive, 2 upon omega square sine of omega t1 upon omega into omega, that is omega square, and minus, now it will be 2t1 upon omega, 2t1 upon omega. So this should be the Fourier transform. If we check in the options, so j times 3 is not correct, 2 sine omega t1 upon omega square and minus 2t1 upon omega. I think we have obtained the same expression. So option C is correct. J times 2 sine omega t1 upon omega square, j times 2 sine omega t1 upon omega square, and minus of 2t1 upon omega. Here it is minus 2t1 upon omega. Therefore option C is correct for the given question. चलिए next question देखिए, what is the Fourier transform of the signal gt is
1 upon 1 plus jt. So in such questions where you cannot actually understand how to find the Fourier transform, you just recall one of the two properties, either frequency shifting or duality property will be used in such type of questions. What you all know is, if there is, first I am writing duality property of Fourier transform, that is, if x of t has a Fourier transform, let's say we are representing Fourier transform by y of omega. Let's say x of t has a Fourier transform y of omega. Then if we replace in transform omega by t, whatever is the transform, if we replace omega by t, then the Fourier transform of this time domain signal yt will be equals to 2 pi times, we just have to replace this t in x of t function by minus omega, so it will be x of minus omega. It is the duality property. So if you can remember any Fourier transform of the form 1 upon 1 plus j omega, then you can apply duality property on that transform. So you just have a very common transform, that is, if you take e to the power minus at ut, then the Fourier transform is what? 1 upon a plus j omega. Correct? So if you want to have a transform 1 plus jt, means 1 plus j omega. So if you put a equals to 1 here, so e to the power minus t ut will have a transform that is equals to what? 1 upon 1 plus j omega. Now we will be applying duality property on this transform. That is what? We know that e to the power minus t ut has a transform equals to 1 upon 1 plus j omega, right? So if now we apply duality property on this, applying duality, how to apply duality? In the transform, whatever is the transform, if you replace omega by t, then there will be a time domain signal formed. What will be that time domain signal? If we replace omega by t, then the time domain signal would be 1 upon 1 plus jt. Then the transform of this signal will be obtained simply by using 2 pi times whatever the time domain signal was. Here it was the time domain signal e to the power minus t ut. You just have to replace this t by minus omega. 2 pi times replace x of t, in x of t replace t by minus omega. So 2 pi times, if we replace in this x of t, t by minus omega, so we are going to get e to the power minus of, at the place of t we are replacing it by minus omega into u of minus omega. So finally what we have obtained is 2 pi e to the power plus omega into u of minus omega. So it is the final answer, 2 pi e to the power omega u of minus omega, that is option A is correct for the given question. Next, what is the Fourier transform of rectangular pulse shown in the figure? Again, what we have already discussed. For this rectangle, if you see, value of A is given to be k and total width tau is given to be 2t naught. So the Fourier transform will be what? X of omega will be a tau. First you have to check all the options are in the form of Sinc functions. Okay, so in terms of Sinc, if you have to write, if we can write, if we will be writing in the terms of sampling, then we are writing a tau sampling of omega tau by 2. If you have to write it in terms of Sinc function, then you have to write a tau Sinc of whatever is written in terms of sampling, you just have to divide it by pi. So it will be omega tau upon 2 pi. Sinc of omega tau upon 2 pi. Okay. Sinc of omega tau upon 2 pi. You just have to put all the values and you will be getting the answer finally. So value of A is k into value of t is tau is 2t naught into sinc of omega into tau value is 2t naught divided by 2 pi. So final answer is 2k t naught into sinc of this 2 and 2 will get cancelled, omega t naught upon pi.
2k t naught into sinc of omega t naught upon pi. 2k t naught into sinc of omega t naught upon pi means option A is correct. Next, what is the Fourier transform of function t to the power minus mod of t? Again, as you know, if x of t has a Fourier transform x of omega, then t into xt will have a Fourier transform that is given to be j omega times d by d omega of j times d by d omega of x of omega. So we have already discussed that if xt is e to the power minus of mod of t, if we take e to the power minus a mod of t, then the transform value we have already discussed 2a upon a square plus omega square. If we put a equals to 1, so we'll be getting xt, that is e to the power minus mod of t. The Fourier transform will be what? Put the value of a equals to 1, that is 2 upon a is 1, so it is 1 plus omega square. So if x of t, we are having the Fourier transform of xt, then if we multiply this function by t, and we'll be getting the function t times e to the power minus mod of t, then the Fourier transform will be simply j times d by d omega of this function 2 upon 1 plus omega square. And if you solve it further, then you'll be getting it is equals to minus j 4 omega upon 1 plus omega square whole square. That is option B will be correct. 1 plus omega square whole square. Option B is correct for the given question. So these results are very important to be remembered, but still if you are not remembering, then you can find it using the differentiation. यहाँ तक में किसी को कोई डाउट तो बताएंगे एक बार. So we have already done 40 questions. Next one is inverse Fourier transform of the following. I am just giving you the clue. You can finally take, that is x of t. From synthesis equation, x of t is what? 1 upon 2 pi times integration from minus infinity to plus infinity x of omega e to the power plus j omega t d omega. So you just have to take this, means we are having x of j omega different values from minus infinity to infinity, so it will be 1 upon 2 pi from minus pi to 0. If we first take minus pi to 0, the value of x of omega is given to be minus 2j e to the power plus j omega t d omega, and then from 0 to pi it is given to be 1 upon 2 pi is outside of both the values. From 0 to pi it is given to be plus 2j into e to the power plus j omega t d omega. So you just have to solve for these integral and you will be getting the option. I am leaving it for you. You just have to solve these two integrals and find out the question. Find out the given option. So in these two, these 2j can also be taken outside as this is constant, and you just have to integrate e to the power j omega t with respect to omega. That will be e to the power j omega t upon j omega, and you have to put the चलिए इसको सॉल्व कर ही लेते हैं. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू. अगर आपने 2j भी दोनों में से कॉमन बाहर कर लिए तो 2j अपॉन 2 पाई. तो पहला आपका जो इंटीग्रेशन है, जो पॉजिटिव इंटीग्रेशन होगा, वो क्या है? 0 से पाई के बीच में हमारे पास क्या है? e टू द पावर सिर्फ j ओमेगा t d ओमेगा. इस वाले को पहले लिख रहे हैं. वी आर राइटिंग दिस फर्स्ट. 0 टू पाई इट इज 2j वी हैव टेकन आउटसाइड, so it is e to the power j omega t d omega, and this will be minus sign. Here we are having minus pi to 0 e to the power plus j omega t d omega. So it is j upon pi into integration is e to the power j omega t upon, we are differentiating only with respect to omega, so here it will be jt in the denominator, and we have to put the limits from 0 to pi. J omega t
e to the power j omega t upon jt from 0 to pi, and minus, again here the integration result will be e to the power j omega t upon jt, and we have to put limits from minus pi to 0. So the result is j upon pi. If you put t is equals to pi, so it will be omega equals to pi, so it will be e to the power j pi t, minus if you put t omega equals to 0, so it will be 1 upon jt, minus again if you put omega equals to 0, so it will be 1, minus if you put minus pi, so it will be e to the power minus j pi t divided by jt only. So overall denominator is jt, so j upon pi into overall denominator is jt. What we are having here is e to the power plus j pi t minus 1 minus 1, and minus it will be plus e to the power j pi t. So the final result, we can cancel it, this j, and we are having that is equals to 1 upon pi t, 1 upon pi into t, and here we are having e to the power j pi t. Okay, it is minus j pi t, it is minus j pi t, minus j pi t. So it is e to the power j pi t plus e to the power minus j pi t and minus 2, minus 1, that is minus 2. Now we know that e to the power jx plus e to the power minus jx, it may be written as what? Cos, you know that cos pi t is equals to e to the power j pi t plus e to the power minus j pi t divided by 2. So this factor, it may be written as 2 cos pi t. So it is finally what we are getting is x of t is equals to 1 upon pi t times, it is 2 cos pi t minus 2. So if we take 2 common outside, so it will be 2 upon pi t into cos pi t minus 1. So accordingly 2 upon pi t, 2 upon pi t cos pi t minus 1 should be the option. Sin n pi n, in terms of cos n pi n, sin n pi it is given. Okay. Actually, I think here it is the mistake, because if we are having Fourier transform of continuous time signal, so x of, okay, my mistake. Actually, it is not continuous time function, it is discrete time Fourier transform. And in case of discrete time Fourier transform, everything is same, just the limits are always from minus pi to pi. Limits are from minus pi to pi. Therefore, everything will be same only. Now, if you see here, then e to the power not, here it is not j omega t, it is j omega n. Everywhere where I am written t, you just have to replace t by n. You just have to replace all t by n. So it will be cos n pi minus 1, that is 1 plus cos pi by 2n. Okay, so everywhere if we replace cos t by n, so you will be having x of n equals to, x of n is equals to 2 upon n pi into cos n pi minus 1, 1 minus cos n pi. So what you can write here, 2 upon n pi cos n pi minus 1. Okay. As you know, cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta. So this cos n pi,
it can be written as cos n pi. It can be written as 1 minus 2 sine square of n pi by 2. So if you place cos n pi equals to 2, 1 minus 2 sine square n pi by 2, so you will be having 2 upon n pi into 1 minus 2 sine square n pi by 2 and minus 1. So it will be this 1 and 1 will get cancelled, and you will be having 4 upon n pi times minus 4 upon n pi times sine square n pi by 2 minus 4 upon n pi sine square n pi by 2, and accordingly 4 upon n pi sine square n pi by 2. Here I think minus sign is missing. Cos 2 theta is cos square theta minus sine square theta. So it is 1 minus sine square theta minus sine square theta. Okay. 1 minus 2 sine square theta. Yes, I have written it right. So just let me check. I think in option minus sign is missing. Please wait. क्या आप लोगों को यहाँ पर कहीं माइनस साइन छूटा हुआ दिख रहा है? यहाँ जहां भी टी है ये सभी टी को एन से रिप्लेस कर लेना आप. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिप्लेस ऑल टी बाई एन, क्योंकि ये गलती से मैंने टी लिख दिया था. उसके बाद की सारी चीज़ें ठीक हैं. तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो 2 cos पाई टी माइनस 1. तो यहाँ हमारे पास के पाई टी नहीं था, एन पाई हो गया माइनस 1, और cos एन पाई था तो cos एन पाई को हमने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एन पाई बाई 2. ठीक है, तो हमने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एन पाई बाई 2 माइनस 1. ठीक है, तो रिजल्ट तो यही आएगा हमारे पास. यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है माइनस साइन आ रहा है मेरा माइनस 4 अपॉन एन पाई साइन स्क्वायर एन पाई बाई 2, और यहाँ ऑप्शंस में अगर हम देख रहे हैं तो ये माइनस साइन मिसिंग है. लेकिन देखिए इनमें से आप वैसे भी ये देख सकते हैं कि जो एक्स ऑफ ई टू द पावर जी ओमेगा आपको गिवन है, ये एक्स ऑफ ई टू द पावर जी ओमेगा कैसा है? ये आपको इमेजनरी एंड ऑड सिग्नल दिख रहा है. ये प्योरली इमेजनरी है एक्स ऑफ ओमेगा. प्योरली इमेजनरी के साथ साथ 0 से पाई के बीच में जैसा पॉजिटिव है वैसा माइनस पाई से 0 के बीच में क्या है? नेगेटिव है. मतलब अगर आप एक्स ऑफ ओमेगा को देखें तो एक्स ऑफ ओमेगा हमारा कैसा है? इमेजनरी एंड ऑड. तो इसके लिए जो इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा? आप ये जानते हैं कि अगर हमारा सिग्नल टाइम डोमेन में अगर ट्रांसफॉर्म ऑड है मतलब सिग्नल भी ऑड होना चाहिए. ठीक है, और उसके साथ साथ और क्या होना चाहिए हमारा? अगर हमारा ये जो सिग्नल है वो कैसा होना चाहिए? अगर ये इमेजनरी एंड ऑड है तो रियल प्लस ऑड सिग्नल होना चाहिए. तो रियल प्लस ऑड सिग्नल होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप अगर देखेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास जो आएगा, खैर आप इसको देख लीजिएगा. इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो ये माइनस साइन यहाँ पर होगा. आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे अगर मान लीजिए माइनस कहीं पर दिख रहा है आपको कि मिसिंग है. अदरवाइज ऑप्शन तो हमारा यही करेक्ट दिख रहा है हमें, 4 अपॉन एन पाई साइन स्क्वायर एन पाई बाई 2. इसको अगर आप एक बार आप चेक कर लेना. और ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमने देख लिया आज. जैसे देखिए सभी क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं. जैसे यहाँ पूछा गया इफ द फंक्शन एक्स टी इक्वल्स टू 10 सिंक ऑफ टी बाई 4 व्हाट इज द टोटल एरिया अंडर द फंक्शन. कैसे सॉल्व कर सकते हैं? व्हाट वी ऑल हैव टू नो इज द इफेक्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑन एरिया.
what we have already discussed is, if there would be sinc of t only, then area will be what? Then its area is equals to 1. So if we apply a time shifting of sinc of t by 7, if we find the area of sinc of t by 7, then you must be knowing that if x of t has area 1, if as area a, then x of alpha t has an area that is equals to a upon alpha. By whatever factor you are performing time scaling, area gets divided by that factor. So if sinc of t, if there will be only sinc of t, then area would be 1. If sinc of t upon 7, then area will be what? 1 upon scaling by 1 upon 7. So it will be area 1 upon 1 upon 7, that is equals to 7. Now if you replace t by t plus 4, so sinc of t plus 4, sinc of t plus 4 by 7, what we have performed is we have replaced t by t plus 4. That is, we are performing time shifting operation. Time shifting has no effect on area. If x of t has an area a, then x of t plus or minus t naught will also have area equals to a. There is no effect of time shifting on area. So sinc of t plus 4 by 7 will have an area equals to 7, no effect of time shifting. We have found out sinc t plus 4 upon 7. Now if you take amplitude scaling by 10, so 10 sinc of t plus 4 by 7, what will be the area? Again, if x of t has area a, then if you multiply or time scale x of t by k, then area gets multiplied by that factor. If x of t has an area a, then k times x of t will have area k into a. That is equals to, if this function has area 7, and if you are performing amplitude scaling by 10, then the total area will now become 10 into 7, that is equals to what? 70 square units. And therefore the correct option is what? Option C is correct. So these things are very important to have to understand the effect of different operations on area, different operations on energy. These are very important. Okay, next, consider the following diagram. Which one of the following gives Laplace transform of the waveform? So if you just represent this given shape in terms of step function, and if you know that x of t, if x of t has Laplace transform x of s, then x of t minus t naught, the time shifting property of Laplace transform, that is e to the power minus st naught times x of s, then the question is solved. Here it must be 1. If you visualize, then you can represent as vt is equals to, it is 1 into u of t minus 1 plus 1 into u of t minus 2 minus 2 into u of t minus 3. I hope you must be able to represent this function in terms of step. You just have to check where the upward or downward arrows are occurring. Only at that places step function will be written. So upward arrows or downward arrows are occurring at t is equals to 1, t is equals to 2, and t is equals to 3. So at t is equals to 1, function is getting increased by 1 unit. So we have written 1 u of t minus 1. T minus 1 represent that step function is starting from t is equals to 1 and it is getting increased by 1. So it is coefficient is here 1 plus 1. Again at t is equals to 2, you can see that the function is increasing by 1 amount. So the coefficient is again plus 1 and step function is occurring at t is equals to 2. Therefore, the term is written in between u of t minus 2. For the theory of these kind of problems, you can refer revision. I have already mentioned, that is, you can search for the playlist revision through important questions of signals and system by my name on the same channel, and you will be having revision of different concepts of different units individually, and you will be able to solve all these questions. So if you have just written these this given function in terms of step function, then just apply the time shifting property of Laplace transform, having known that ut has a Laplace transform 1 upon s. So Laplace transform of vt, v of s will be what? U of t minus 1. Shifting by minus 1, t naught is equals to 1. So it will be e to the power minus s upon s. For this term, Laplace will be e to the power minus 2s upon s, and minus for this term you will be Laplace will be 2 e to the power minus 3s upon s.
you can take 1 upon s common. So it will be e to the power minus s plus e to the power minus 2s minus 2 e to the power minus 3s into 1 upon s. And accordingly, if you see e to the power minus s minus 2s minus 2 e to the power minus 3s upon s, this option C is correct. So these are very simple questions but repeatedly asked in ESE exams. Given the Laplace transform, next question is, you have given Laplace transform of ft is equals to fs, then the Laplace transform of ft e to the power minus at. It is the frequency shifting property of Laplace transform. From frequency shifting property, we know that if f of t has a Laplace transform f of s, then if we multiply e to the power s naught t, e to the power s naught t into f of t, then the transform will get shifted. You just have to replace s by s minus s naught. So if you see here, we are multiplying e to the power minus at. So if we multiply e to the power minus at in f of t, you can just compare and find that at the place of s naught you are having minus a. S naught is what? Minus a. Whatever we have written here, it is the frequency shifting property of Laplace transform. It is frequency shifting property. And we are just comparing that if we are multiplying ft by a factor to the power minus at, just compare and find that s naught is equals to minus a in this case. Therefore, the transform we can write f of s minus of, at the place of s naught we have written minus a. So the transform will be f of s plus a. So the correct option is f of s plus a, that is option A is correct. Next, a forcing function t square minus 2t u of t minus 1 is applied to a linear system. The Laplace transform of the forcing function is. See, in this case, there are two methods. Method 1 that we don't have to follow is x of t. Let's say this forcing function, we are naming it as x of t. First, we are mentioning method 2 first, not to be used. The method is to be avoided. X of t is given to be t square minus 2t into u of t minus 1. Okay, so you can write it like t square into u of t minus 1 and then minus 2 into t into u of t minus 1. Right? Now, what you have to do is, you know that if ut has a Laplace transform 1 upon s, then if you apply time shifting by minus 1, then the Laplace transform will be e to the power minus s upon s. Then if you multiply it by t, so t into u of t minus 1 will have Laplace transform using multiplication by t property. We have already mentioned several times in this video. That is, it is going to be minus of s into d by ds of x of s, minus of d by ds of x of s. So by this way you can either find the transform, and when you have completed to find t into u of t minus 1 transform, then again multiply it by t, so you can find t square into u of t minus 1. But this is a lengthy method. What you have to prefer is, if we see, you are given t square minus 2t into u of t minus 1. If you modify it like t square minus 2t plus 1 minus 1, then there will not be any effect into u of t minus 1. Why we are doing it? If you see, this particular term can be written as what? It can be written as t minus 1 whole square. It can be written as t minus 1 whole square. So you can write x of t minus 1 whole square into u of t minus 1. And then minus 1 into u of t minus 1. So now x of t is now divided into two parts.
if you find individually the Laplace transform of these two parts, then using linearity property, just take minus sign in between two Laplace transform and the final transform will be there. So if you have to find Laplace transform of t minus 1 whole square into u of t minus 1, then you can just find it in one step. That is, you know that the Laplace transform of t into ut is what? The Laplace transform of or t square into ut. T to the power n ut has a Laplace transform factorial n upon s to the power n plus 1. Therefore, t square ut will have a Laplace transform that is 2 upon s cube. Now, if you replace all t by t minus 1 at both the places of t, if you take t minus 1, so t minus 1 whole square into u of t minus 1, you can simply find the Laplace transform of this signal by using time shifting property on this function. If this function is x of t and it is having a Laplace transform x of s, then this function is x of t minus 1. You just have to multiply a factor e to the power minus s in this given Laplace, that is 2 upon s cube. Are you getting my point, what we are doing here? T square ut, you know it is having a Laplace transform 2 upon s cube. Now if you replace all t by t minus 1, then if x of t has a Laplace transform x of s, then x of t minus 1 will have a Laplace transform e to the power minus s into x of s. So we have just multiplied this x of s by e to the power minus s because we have shifted this x of t by t minus 1. So now you have already got the transform of t minus 1 whole square into u of t minus 1. Therefore, if it is x of t, so x of s is what? For this part, the transform is 2 e to the power minus s upon s cube. And minus, for this part, you know, if ut has transform e to the power, ut has transform 1 upon s, so u of t minus 1 will have transform e to the power minus s upon s. So if you take this e to the power minus s common, then you are having 2 upon s cube minus 1 upon s. So the total result is what? 2 minus s square divided by s cube into e to the power minus s. And it is the final answer. You just have to simplify it. We have taken the LCM as s cube. Here it is 2 only, and minus s square, 2 minus s square upon s cube into e to the power minus s. So the final answer is 2 minus s square upon s cube into e to the power minus s, and this option D is correct. तो क्या आप सभी लोग ये समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है? हेलो प्रभु, जय जगन्नाथ। प्रभु आज बहुत लेट हो गया, हम कल आप मुझे याद दिलाइएगा, बिल्कुल मैं आपका क्वेश्चन ले लूँगा। तो प्रभु तक को एक सिग्नल से रिलेटेड दूसरे सिग्नल का प्लॉट देखना, अभी मेरे पास वो क्वेश्चन भी नहीं था, तो बिल्कुल हम कल कर लेंगे। जो भी आपका डाउट है उसको, ये ESE के PYQ सेक्शन हम सिलेक्शन यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्या ये सभी को क्लियर हो गया? चलिए, तो मुझे लगता है आज रात भी काफ़ी होगी, अब हमें इस लेक्चर को यहाँ पर एंड कर लेना चाहिए। आज हम 45 क्वेश्चंस तक हम आ पाए हैं। अभी आप अगर देखेंगे आगे के क्वेश्चंस और भी ज़्यादा सिंपल, आपको सिंपल ही क्वेश्चंस दिखेंगे, जैसे ये जो भी क्वेश्चंस है। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं 45 क्वेश्चंस तक, और कल के सेशन में हम रिमेनिंग और भी जितने क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम, जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आज का जो सेशन हमने किया, इसमें किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? क्या आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं? हेलो आदित्य। चलिए, तो 44 का बी तक आ गए थे। साक्षी, आप लगातार बनी हुई थी, वेरी गुड। तो जहाँ भी जो डाउट हो, आप लोग अपने डाउट्स भी रखिएगा साथ में। जैसे जो क्वेश्चंस हमने किए, अगर इनके अराउंड के जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें कोई डाउट्स आपको आते हैं तो डेफिनेटली हम उनको कवर करेंगे, और देखते हैं अब नेक्स्ट सेशन में इसके बाद के और जितने भी आपके PYQ रिमेनिंग हैं तो सभी को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन एंड करते हैं, और आई होप कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को देखा होगा और खुद से आप लोग सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो अगले सेशन से भी आपको ये रखना है कि आप पहले खुद सॉल्व करेंगे, फिर हम यहाँ पर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, थैंक यू।